मनोज जी वाकई में दो जगह दिख रहे हैं। कैमरे से भी आप कर रहे हैं क्या मनोज जी? मैं नहीं सर। जी लगता तो है। तो साहब कोई मोतिया का दोस्त तो नहीं आ गया ना? चलो, मिसेस को मैं भी दो दिखाई दे रहा हूँ सर, इसलिए। अच्छा अच्छा। वेरी गुड। हेलो। डॉक्टर नाथ का स्पीकर डॉक्टर रंजना ज्वाइन कर रही है। एक बार वो हुए। मैं सबसे पहले जितने भी पैनलिस्ट हमारे आए हुए हैं उनका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जो भी इस फेसबुक से जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। और एक संक्षिप्त परिचय जो है वो मैं देना चाहूंगा। डॉक्टर MP सिंह हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं IWST, और IPIRTI के डायरेक्टर हैं डॉक्टर शक्ति सिंह चौहान। IPIRTI जो कि IIT भी बार बार हम लोग कहते हैं इसको, प्लाईवुड का। मिस्टर नीलाद्री बासु हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सर, नमस्कार। डॉक्टर प्रशांत MA मैंगलोर डायरेक्टर, मैंगलोर AK ग्रुप से डायरेक्टर हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत है आपका सर। थैंक यू। मिस्टर सुभाष जोली जी हमारे वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जो सभी के साथ सभी को एक साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। डॉक्टर SK नाथ जो कि साइंटिस्ट हैं और IPIRTI से जॉइंट डायरेक्टर रिटायर्ड हैं। डॉक्टर नाथ सर। मिस्टर हरेश अजबानी जी जो व्रिटी इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से CEO हैं, जो उनके ऑनर एंड CEO मिस्टर व्रिटी इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड से। मिसेस सुजाता D IPIRTI के साइंटिस्ट हैं बेंगलुरु में। सुजाता जी। मॉर्निंग सर। ओके, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं आनंद नंदनवार जो कि IPIRTI के साइंटिस्ट हैं और सबको मेरा नमस्कार। आए हैं। हाँ जी, सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर रंजना यादव हैं IPIRTI की साइंटिस्ट हैं जो अब मोहाली में इंचार्ज हैं। नमस्ते जी। नमस्कार सब। नमस्कार मैम। नमस्कार। हमारे मिस्टर गजेंद्र राजपूत हैं जो वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सभी को नमस्कार सर। और मिस्टर विद्यानाथन हरिहरन जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है WTA के और केमिकल आदि क्षेत्रों में काफी अपनी योग्यता रखते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भविष्य में उनकी योग्यता को अधिक से अधिक हम इसमें इस्तेमाल करें। मिस्टर मनोज ठाकुर हैं। नमस्कार सर। जो हमारे नमस्कार सर सीनियर सभी को। हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और मैं हूं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि सीरियस बातें हमारी शुरू हो उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे होस्ट हैं, स्पॉन्सर हैं ग्रीन पैनल, मैं इनका एक वीडियो प्रेजेंट करूं आपके सामने। मेरी टेक टीम से आग्रह है कि प्लीज The world is moving towards sustainable, versatile environment and people-friendly living.
Greenpanel Industries Limited, the largest manufacturer of MDF in India and leading wood panel brand in Asia, is committed to this new lifestyle. Being a true Make in India brand, Greenpanel is strengthening the nation bit by bit, piece by piece. We resolve to delight our consumers with new generation solutions in wood paneling and surface enhancement. The brand has made a remarkable journey over the years since its earlier avatar as Greenpanel Max and now as Greenpanel. We are the torchbearers of new global India, and we do so under the guidance of Mr. Shiv Prakash Mittal, Chairman, Mr. Chauhan Mittal, MD, CEO. Greenpanel is striding towards setting new benchmarks for the industry. 2 state-of-the-art manufacturing facilities with German technologies, sustainable practices across categories, a wide distribution network with 3,000 plus retailers and 24 plus branches in India. We, the pioneers of the MDF revolution, are here to redefine wood panel industry. We are proud to present the building blocks that makes interior spaces desirable and strengthening the nation. We are Greenpanel, a world of limitless possibilities. We are Greenpanel, the pride of India, the panel of India. धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद बेहती जी। अब मैं सुभाष जोली जी से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर यस एमपी सर को आमंत्रित करें सर और उनका परिचय भी कराएं सर थोड़ा सा। पहले देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है प्लाई एंड पैनल एक्सपोर्ट बनाने में अपना योगदान दे, जिससे सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी को बल मिले, ताकि अपने देश में अपने माल की कीमत अच्छी व सुदृढ़ रहे, अपना बाजार स्थिर रखने में भी योगदान हो। जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडस्ट्री को विश्व स्तरीय माल बनाने में दक्षता हासिल होगी, साथ ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके साथ ही देश की जीडीपी व फॉरेन करेंसी में योगदान। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन एक्सपोर्टिंग प्लाईवुड एंड पैनल फॉर इंडियन इंडस्ट्री। इस आज के वेबिनार को ऑल इंडिया प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन श्री नरेश तिवारी व अनेक इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड पर अरेंज किया है, ताकि उन सभी इंडस्ट्री को मालूम हो सके। Recording in progress. ताकि उन सभी इंडस्ट्री को मालूम हो सके कि इसके लिए किन किन स्टैंडर्ड का पालन करना होगा, कब, कहां, किस प्रकार, कैसे जैसे प्रश्नों का समाधान व उत्तर दे सके। WTA अपने इस प्रयास में कितना सफल है, आपके व्यूअर्स कमेंट्स और फीडबैक से मालूम होगा। हमने इंडस्ट्री के पैनलिस्ट बोस साहब, डॉक्टर प्रशांत, श्री हरेश अजबानी जी को अपने अनुभव व सुझाव साझा करने के लिए रिक्वेस्ट की है। तो पैनल में टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को साझा करने के लिए IPIRTI की टीम डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर आनंदन, डॉक्टर रंजना यादव हैं। साथ में WTA के साथी गजेंद्र राजपूत व वैद्यनाथन जी हैं। एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर SK नाथ, साइंटिस्ट व डिप्टी डायरेक्टर फार्मर रहे हैं। साथ में आशीर्वाद व सुझाव व संबंधित सरकार की मदद के लिए डॉक्टर MP सिंह, डायरेक्टर IWST और डॉक्टर शक्ति सिंह चौहान। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर MP सिंह से उनका बहती जी पूर्ण परिचय बताएं, ताकि कार्यक्रम की शुरू की जा सके। धन्यवाद। श्री बहती।
डॉक्टर MP सिंह, जो वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में डायरेक्टर पद पर हैं। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स में स्पेशलाइजेशन के साथ मास्टर डिग्री और FRI देहरादून से सिल्वीकल्चर में ग्रोथ एंड सुटेबिलिटी ट्री स्पेसीज इन फॉरेस्ट प्लांटेशन झारखंड सब्जेक्ट पर PhD करने के पश्चात झारखंड कैडर 1989 बेस से ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस में अब तक 31 सालों का प्रोफेशनल करियर करते हुए वन विभाग के विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं। उनके द्वारा सुशोभित पद ये हैं: EPCCF स्पेशल प्रोजेक्ट झारखंड, फील्ड डायरेक्टर पलमाऊ टाइगर प्रोजेक्ट मेदिनीनगर झारखंड, डायरेक्टर फॉरेस्ट एजुकेशन देहरादून, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस डिवीजन FRI देहरादून के हेड रहे हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट डिवीजन FRI देहरादून के भी हेड रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ICFRI देहरादून के, और झारखंड के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी रहे हैं। डॉक्टर MP सिंह की 7 पुस्तकें और 18 रिसर्च पेपर अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और कृपया इंट्रोडक्टरी अपनी बात शुरू करें। धन्यवाद सुरेश बहेती जी। जी सर। आज के उपस्थित सभी पैनलिस्ट, डॉक्टर शक्ति सिंह चौहान डायरेक्टर IPIRTI, नीलाद्री बसु, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर SK नाथ, सुभाष जोली जी, हरेश अजवानी जी, सुजाता, मिस सुजाता, मिस्टर आनंद, डॉक्टर रंजना, मिस्टर गजेंद्र राजपूत, वैद्यनाथन जी एवं मनोज ठाकुर जी एवं उपस्थित सभी श्रोतागण। आज का विषय इंडस्ट्री के लिए, प्लाईवुड एंड पैनल सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें यह सोचने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें। इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि हमारे इंडस्ट्री में क्वालिटी के ऊपर या इंटरनेशनल रिजीम को समझने की जो आवश्यकता है, ताकि हर एक कंट्री का अपना कुछ अलग अलग मापदंड है। स्पेशली प्लाईवुड एंड पैनल में इमिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्पेशली फॉर्मेल्डिहाइड इमिशन का, जिसके लिए स्टैंडर्ड्स भी बने हुए हैं। हमें उस स्टैंडर्ड को अचीव करना है ताकि हम एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो सके। प्लाईवुड इंडस्ट्री की शुरुआत लगभग 100 वर्ष पहले हुई है, यह भी हम लोग जानते हैं। और शुरुआत जो हुई थी वह एक्सपोर्ट के नीड के लिए ही हुई थी। उस समय नॉर्थ ईस्ट से जो चाय जो है, जो टी का एक्सपोर्ट होता था, उस टी के लिए जो बक्से यूज होते थे वह विदेशों से आयात होते थे, वह इंपोर्ट होते थे। फिर उसमें टी पैकेजिंग होकर बाहर विदेश जाते थे। जब इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने, विशेषकर जब वर्ल्ड वार 1 हुआ, उसमें इंपोर्ट जो है सो आना बंद हो गया, तो उस समय कुछ लोगों ने प्रयास किया। उसके बाद उस प्रयास का काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आए और हमारे जो प्लाईवुड के जो बॉक्सेस थे उसी को चाय के निर्यात में प्रयोग होने लग गए। लेकिन वर्ल्ड वार
2 के बाद फिर से जो कंपनियां प्लाईवुड को बॉक्स बनाने के लिए जो इंडिया में आयात करती थी, उसका फिर से प्रेशर आया और यह फिर से उस दौर में बहुत गति नहीं प्राप्त हो सकी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब फिर से वहां से बाहर से आयात करना मुश्किल हो गया, तो इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी मिली और इंडस्ट्री ग्रो किया। दैट इज द एरिया। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द जर्नी ऑफ प्लाईवुड स्टार्टेड with the export only. So but we have not made much progress. उसके बाद से हम लोग की अपनी जो है लोकल रिक्वायरमेंट्स, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स इतने थे प्लाईवुड के, क्योंकि ये प्लाईवुड को लोगों में बहुत पॉपुलर हो गए और इस प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग इंडस्ट्री आई और इंडस्ट्री का ग्रोथ काफी अच्छे तरीके से डोमेस्टिक मार्केट के लिए हो रहा है। अभी भी बीच में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में नॉर्थ ईस्ट से जो प्लाईवुड इंडस्ट्री थे वो सारी डिस्टर्ब हुई, लेकिन उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से नॉर्थ इंडिया में प्लाईवुड इंडस्ट्री आए और वो लोकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं। अब आज के दिन में यह देखने की आवश्यकता है। मैं एक डाटा दिया था बहती जी को, अगर आप अपलोड कर देंगे तो सभी को मैं दिखा देना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट का जो डाटा है वो किस तरीके से हमारा है लास्ट 30 इयर्स का। बहती जी अपलोड करेंगे उसको? टेक्निकल टीम प्लीज। नेक्स्ट। यह जो है सो लास्ट 10 इयर्स का एक्सपोर्ट का डाटा है। अगर इसको आप देखें तो हम लोग दुनिया में कहीं भी नहीं टिकते हैं, लेकिन हाँ यह भी कहा जा सकता है कि कुछ प्रयास हो रहे हैं, विशेषकर विगत वर्ष में। मे बी बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द सप्लाई लाइन फ्रॉम द चाइना, आई थिंक वी हैव पिक्ड अप the export in the last year. Next. ये पूरे देखेंगे तो 30 साल की जर्नी है। 30 साल की जर्नी में जो हमारा एक्सपोर्ट का जो लेवल रहा है वह बहुत अभी सबसे अच्छा है। इसका मतलब यह है कि यह हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसके पूर्व जब तक इंडस्ट्री डिस्टर्ब नहीं हुई थी, उस समय आप कहेंगे कि 2006-7 और स्पेशली 2009 में 8-9 में हमारा एक्सपोर्ट जो है सो अच्छा था। उस और बीच में काफी डिस्टरबेंस आई, इंडस्ट्री के भी डिसलोकेशन से डिस्टरबेंस आई है। और अभी हम लोग जो है सो अगर कहा जाए तो हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमें एक उम्मीद की किरण बनी है। यह प्लाईवुड की जर्नी है। तो यह एक इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि हम लोग कभी भी एक्सपोर्ट में बहुत बड़े एक्सपोर्टर नहीं रहे हैं हम। नेक्स्ट। यह पार्टिकल बोर्ड के लिए एक्सपोर्ट का डाटा है। अगर इसकी 10 साल की जर्नी देखें तो बीच में हम अगर स्केल देखेंगे तो स्केल बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं और हम पार्टिकल बोर्ड में भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट। यह एमडीएफ का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमडीएफ की रिक्वायरमेंट हमारे कंट्री में ही अभी पूरी नहीं हो पा रही है, और फिर भी हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग कुछ एक्सपोर्ट कर पाए। तो यह एक नटसेल में इस डाटा दिखाने का यही मकसद था कि हम लोग बहुत मिनिमम लेवल पर हैं, लेकिन पोटेंशियल है। बिकॉज अभी हम लोग डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए हम अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अब है कि इसको हटा सकते हैं। अब है कि
या ये एक ट्रेंड दिखा रहा है, इसको हटा लीजिए। तो मेरा जो कहने का मतलब यही था कि जो भी कंस्ट्रेंट है, पॉलिसी लेवल की जो कंस्ट्रेंट है, जो मेजर कंस्ट्रेंट है जिसको कि हमें चैलेंज करने, जिसको जो हमें हमारे लिए चैलेंजिंग है, उसको ये मार्क करने की कोशिश है करनी चाहिए हमें। और जो जो कंस्ट्रेंट है उसको हम लोग अगर एक तरह से गौर करेंगे, और जहां तक गवर्नमेंट की सपोर्ट की आवश्यकता है, गवर्नमेंट हमेशा उसके लिए तैयार है। एक कल हम लोगों ने डिस्कस किया सर्टिफिकेशन का इशू, कि जो हमारे जो रॉ मटेरियल है वो सर्टिफाइड बहुत कम है, स्पेशली जो प्लाईवुड और पैनल बोर्ड में जो यूज हो रहे हैं, they are all coming from the agroforestry. So for that we are trying कि हम लोग एक एग्री वुड के लिए अलग से स्टैंडर्ड तैयार करें, जो कि हम पूरे वर्ल्ड को बता सके कि हमारे जो प्लाईवुड एंड पैनल है या एग्री वुड से ही प्राप्त होते हैं, इसमें फॉरेस्ट के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो यह एक नैरेटिव हम लोग को पूरे वर्ल्ड को देना पड़ेगा, जहां तक जो स्टैंडर्ड जो एफएससी या पीएफसी के अलग तरीके का जो डिमांड है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में जो ये जो प्लाईवुड एंड पैनल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से बन रहे हैं, वो वहां पर टिम्बर जो सप्लाई फॉरेस्ट से हो रहे हैं, चाहे इवन स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फॉरेस्ट ओनर्स भी जो हैं उनका भी नेचर ऑफ लैंड फॉरेस्ट रहा है। हमारे कंट्री में हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री से ग्रो कर रहे हैं, मतलब हमारा नेचर ऑफ लैंड जो है बेसिकली एग्रीकल्चर है, बट वी आर ग्रोइंग वुड फ्रॉम देयर। सो वी नीड टू टेल द वर्ल्ड दैट एट लार्ज वी आर सप्लाइंग एवरीथिंग फ्रॉम द एग्रो फॉरेस्ट्री। ये अगर इस नैरेटिव को हम लोग लेके चलेंगे तो हमें जितने भी सर्टिफिकेशन के जो भी फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के जो भी मापदंड है उसको हम स्किप कर सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड को हम बता सकते हैं कि इसमें ना तो कोई लीगलिटी का इशू है, ना सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का इशू है। तो ये एक हम लोग इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि सर्टिफिकेशन का इशू को इस तरीके से टैकल किया जाए। और अब जो बाकी जो इपिर्ती जो कोशिश कर रहा है कि कार्ब सर्टिफिकेशन में हम लोग जो एक रिस्ट्रिक्शन है उसको हम लोग पूरा करें, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग को अब हमारा स्टेज आ गया है जहां कुछ इंडस्ट्री जो है क्वालिटी प्रोडक्ट पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। हम जितना ज्यादा अपने प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाएंगे, सो दैट वी आर एबल टू मेक द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड वी मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और हम उसको इसलिए फिर मुझे बहुत आशा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह का ट्रेंड है और जिस तरह की इंडस्ट्री का लेवल है, and the kind of technology we have got in India, I think we will be able to if we target, we will be able to do this kind of export from this sector to the world. Thank you. धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी है। मैं जोली सर से निवेदन करूंगा कि सर अगले अपने हमारे पैनलिस्ट को सर आमंत्रित करें और उनके बारे में थोड़ा सा परिचय भी करा दें सर। डॉक्टर शक्ति सिंह चौहान को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। नमस्कार सर। और डॉक्टर शक्ति सिंह चौहान के बारे में मैं बताऊं कि आज वो IPIRTI के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 28 साल के रिसर्च एक्सपीरियंस्ड हैं। उनकी रिसर्च मुख्यतः इन विषयों पर केंद्रित रही है: अंडरस्टैंडिंग द वुड क्वालिटी वेरिएबिलिटी इन फास्ट ग्रोन प्लांटेशन टिम्बर्स और डेवलपिंग फास्ट एंड रिलायबल मेथड्स फॉर वुड क्वालिटी इवैल्यूएशंस और वुड ड्राइंग टेक्नोलॉजीज एंड वुड पॉलीमर कंपोजिट टेक्नोलॉजी। इन सारे विषयों पर इनकी रिसर्च मुख्यतः केंद्रित रही है। डॉक्टर साहब की अभी तक 85 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और 65 से अधिक कॉन्फ्रेंस सेमिनार में पढ़े गए हैं। डॉक्टर चौहान 4 पुस्तकों के को ऑथर भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब MSc MTech इंदौर से करने के बाद
फॉरेस्ट्री वुड साइंस में पीएचडी न्यूजीलैंड से की, कैंटरबरी यूनिवर्सिटी से की है और वहीं पर पोस्ट डॉक्टरल फेलो भी रह चुके हैं। 2019 में ICFRE टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड से इनको नवाजा गया है एंड एप्रिसिएशन अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी बाय रोटरी साउथ एंड कर्नाटक सिविल डिफेंस कॉर्पोरेशन कन्फर्ड बाय द ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। ये 2013 में इनको दिया गया था। डॉक्टर साहब ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, साउथ अमेरिका, इन सारी जगहों पे काफी भ्रमण कर चुके हैं, तो इनके विस्तृत ज्ञान की हमें अपेक्षा रहेगी कि आप हमें कुछ बताएं कि इस एक्सपोर्ट मुद्दे पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी और सभी डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट और जितने भी लोग इस कार्यक्रम से आज जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जैसे कि डॉक्टर MP सिंह सर ने, डायरेक्टर IWST ने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। ये जो विषय है एक्सपोर्ट ऑफ वुड बेस्ड पैनल प्रोडक्ट्स, ये आज की तारीख में बहुत ही प्रासंगिक विषय है। और अगर हम ये देखें, एज ऑलरेडी सिंह सर ने बताया कि जो हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल या एक्सपोर्ट की जो स्टैटिस्टिक्स है पिछले 10 साल की या 30 साल की, उससे ये डेफिनेटली लगता है कि हम एक बहुत ही माइनर प्लेयर हैं एज ऑन टुडे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ वुड बेस्ड कंपोजिट्स और वुड बेस्ड पैनल्स। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेफिसिट की बात करें तो डेफिनेटली हमारी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हमारा इंपोर्ट भी ज़्यादा है। और मैं भी इसी स्टैटिस्टिक्स को देख रहा था कि पिछले 10 साल में हमारे यहाँ क्या स्थिति है। और अगर हम ये देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, वो जो इंपोर्ट है, वो लगभग 3 गुना है एक्सपोर्ट वैल्यू की कंपैरिजन में। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स देखूं तो हमने 2019-20 में लगभग $245 मिलियन का वुड बेस्ड पैनल इंपोर्ट किया है कंट्री में, एज अगेंस्ट $72 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है। और इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा एक्सपोर्ट जो है वो MDF पैनल का काफी बड़ा है। इनफैक्ट आज की तारीख में या 2019 या 20 की अगर मैं स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करूं तो जो वैल्यू हमारी प्लाईवुड और MDF पैनल की है एक्सपोर्ट वैल्यू, वो मोर और लेस सेम है। लगभग 33 to 34 मिलियन $, हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल रहा है बोथ MDF और प्लाईवुड का। कंपेयर टू दिस टू, अगर हम पार्टिकल बोर्ड का देखें तो वो बहुत ही एक माइनर प्लेयर है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट पार्टिकल बोर्ड का रहा है वो सिर्फ 4 मिलियन $, का रहा है 2019-20 के अंदर। अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि वी एक्सपोर्ट आवर पैनल्स इन बेसिक रॉ फॉर्म, जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास जो पोटेंशियल होता है as a part of product or as an intermediate product for a different final output, जैसे कि फर्नीचर हुआ। फर्नीचर में large quantity of panel products can be used. In fact, और फर्नीचर में हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। तो हम इनडायरेक्टली भी हमारे जो पैनल प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू फर्नीचर। तो हमारे पास ये 2 रास्ते हैं कि या तो हम बेस रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करें या हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में इसको एक्सपोर्ट करें। अब ऐसे सिंह सर ने ऑलरेडी बताया है कि जो लिमिटेशंस है या जो कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे, जैसे सर्टिफिकेशन हुआ या क्वालिटी कॉन्शियसनेस हुआ, इन चीज़ों पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें भी अगर मैं बात करता हूँ कि फर्नीचर में जहाँ पर कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ पैनल प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, वहाँ पर भी रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं। और सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि अगर हम हमारे पैनल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं
तो देयर आर रेगुलेटेड मार्केट्स, जैसे कि यूएस हुआ, यूरोप हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, जापान है, यूएई है, कई इस तरह के कंट्री हैं जहां पर की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जो हैं दे शुड मीट अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नॉर्म्स, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड इमिशन की बात हो या चाहे वो सर्टिफाइड वुड मटेरियल की बात हो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर मार्केट्स जहां पर भी इस तरह के रेगुलेशंस अभी नहीं है। तो या तो हम उन मार्केट्स को भी टैप करने की कोशिश करें एक्सपोर्ट करने के लिए टू स्टार्ट विथ, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो प्रोडक्ट है दे शुड मीट द स्टैंडर्ड क्वालिटी क्राइटेरियाज जो कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड है। एनीवे जो हमारे पैनलिस्ट हैं मिस सुजाता, मिस्टर आनंद, नंदनवार, वो डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड इमिशन और बाकी के स्टैंडर्ड्स को हम किस तरह से मीट कर सकते हैं। और थर्ड एस्पेक्ट जो आता है एक्सपोर्ट के अंदर, इनफैक्ट मैं ऐसे ही कुछ लिटरेचर देख रहा था, इट्स वन ऑफ द थिंग इज कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कि हमारी कॉस्ट जो है मटेरियल की वो क्या है। इनफैक्ट देयर आर सम स्टैटिस्टिक्स, और एक रिसेंटली इवन IKEA हैज कम आउट विथ वन रिपोर्ट, अगर हम उसमें देखें तो हमारे MDF प्रोडक्ट्स या हमारे कंपोजिट प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है इट इज ऑलमोस्ट 25% हायर than the products available in other Asian countries, even particularly like China. और अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं फ्रांस और दूसरे कंट्रीज की, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर मच मोर एक्सपेंसिव। नाउ हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल को तभी टैप कर सकते हैं जब तक कि हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव ना हो अलॉन्ग विथ हमारी क्वालिटी के साथ। तो ये जो तीन इश्यू हैं, सर्टिफाइड रॉ मटेरियल, फॉर्मल्डिहाइड इमिशन नॉर्म्स एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ये तीनों ही इशू बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। और ऑलरेडी जैसा बताया जा चुका है कि इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, इट्स एंड हम लोग अभी हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही जो मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी के लिए हम इंपोर्ट भी करते हैं। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ कि ईयर 2019-20 में हमने $40 मिलियन का पार्टिकल बोर्ड इंपोर्ट किया है, हमने $113 मिलियन का फाइबर बोर्ड इंपोर्ट किया है, और सेम हमने लगभग $118 मिलियन का प्लाईवुड इंपोर्ट किया है। नाउ इट्स ए ह्यूज क्वांटिटी। तो बेसिकली हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी हमें पूरी करना है, उसके साथ ही साथ व्हेन वी come towards export potential, it gives us an edge in terms of our profitability, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करने जाते हैं and also we tend to become global player. In fact अगर हम हमारा ये विजन रखें कि in another 20 years or 25 years we should become a net exporter of all these products rather than being a net importer of all these products. और उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, और जैसे कि एग्रीवुड की बात कर रहे हैं, अगर एग्रीवुड के स्टैंडर्ड्स हम ले आते हैं और सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम को अगर हम टैकल कर सकें, देन वी विल एनकरेज फार्मर्स टू ग्रो लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस मटेरियल, ताकि हम अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो जाए रिसोर्सेज के लिए। और साथ ही साथ अगर इंडस्ट्री अपने आप को मॉडर्नाइज करें, इनफैक्ट MDF और पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री तो ऑलरेडी मॉडर्नाइज है, लेकिन अगर प्लाईवुड इंडस्ट्री अगर हम बात करते हैं तो अक्सर ये बात होती है कि ऑलमोस्ट 80%, 75 to 80% प्लाईवुड इंडस्ट्री इज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ओनली अराउंड 20 to 25% इज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाउ जब तक कि हम मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ आवर एंटायर वैल्यू चेन करते हैं, ताकि हमें चेन ऑफ कस्टडी का बारे में पता हो कि मटेरियल कहाँ से आ रहा है, और साथ ही साथ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इनटू मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट दे आर स्टैंडर्डाइज्ड। एनीवे हमारी डॉक्टर रंजना यादव भी उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम एमिशन को कम, उनको अगर हम इनकॉर्पोरेट कर सकें हमारी प्रोसेसेस के अंदर, दैट विल रियली बूस्ट आवर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। जहां तक मुझे लगता है कि पोटेंशियल इज सर आवाज में प्रॉब्लम है सर, माफी चाहूंगा।
आवाज सर Connection, maybe broadband issues. सॉरी हैंग कर रहा है. I think Dr. Shakti have lost connection. I think ठीक है. या अभी आ गया ना. हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि ग्लोबली MDF is used about 80% of furniture और इंडिया में वो सिर्फ 20% है. तो इतना अगर MDF is यूज हो रहा है फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए ग्लोबली, definitely we have a potential to export these sort of materials to other countries. क्योंकि अगर इतना MDF यूज होता है, और MDF इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि मॉडर्नाइज है, और उसमें अगर ये रॉ मटेरियल सर्टिफिकेशन का इशू और फॉर्मल्डिहाइड एमिशन के इशू, तो ऑलरेडी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं दे आर ऑलरेडी एड्रेसिंग इट. मुझे पता है कि जैसे ग्रीन पैनल है या इवन बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, दे आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स. तो डेफिनेटली जो टारगेट है वो एक्सपोर्ट पोटेंशियल एक्सपोर्ट का ही है, और वो हमें रियलाइज करना चाहिए क्योंकि इसमें जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है. और इसी तरह जितने भी फर्नीचर प्रोडक्ट्स हैं, लाइक इंडिया इज अ मेजर सप्लायर टू फर्नीचर इन USA, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और अगर इन कंट्रीज के फर्नीचर मार्केट को अगर हमने एक्सप्लॉइट किया है या हमने टैप किया है, तो डेफिनेटली हमारे जो पैनल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम उनको इन प्रोडक्ट्स में लेकर के आए और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ें. सो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कुछ ही समय में हमारे जो एक्सपोर्ट को बूस्ट कर पाएंगे. एंड वंस वी एड्रेस these constraints, I think there are very few. टेक्नोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी एडवांस हैं या वी आर एट पार विथ एनी इंटरनेशनल लेवल. और अगर हम जो अनऑर्गेनाइज प्लाईवुड यूनिट्स हैं उनको भी थोड़ा अपग्रेड कर सकें और जाके ताकि वो क्वालिटी कॉन्शियस बन सकें, क्योंकि अभी इशू ये है कि मोस्ट ऑफ दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज दे हैव अ डेफिनेट डोमेस्टिक मार्केट, और चूंकि चीपर प्रोडक्ट्स विद डोमेस्टिक मार्केट, सो प्रॉब्लम they are not looking towards the so we will have an opportunity to increase our export for plywood as well as MDF also, and definitely we should also look forward towards exporting this. And I was in fact surprised to see कि हम कितना veneer import कर रहे हैं देश में. In fact पिछले कुछ समय से there is some issue with connection. तो हमारा जो वीनियर है, हम जो प्लाईवुड के लिए है, हमारी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट हैज गॉन अप ड्रामेटिकली. और पिछले 3 या 4 साल में ओनली गैबन इज गिविंग अस 30% जो इंपोर्ट है वो सिर्फ गैबन से है, और ऑलमोस्ट 70% इंपोर्ट सिर्फ 3 कंट्री से, गैबन, इंडोनेशिया एंड म्यांमार. They are contributing to our import for veneers. I think हमें इस चीज को भी देखना है कि क्या हम हमारे देश में ही indigenously, like I think most of us are importing face veneers, so we should try to explore the possibility of making face veneers from our own species so that our import dependency comes down and also we get more revenue from our export of these products. Thank you very much.
And sorry for that disconnection a couple of times. नहीं सर, बहुत बढ़िया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो थी कनेक्शन की, लेकिन मजा आया सर आपकी जानकारी में। अब मैं निवेदन करूंगा श्री नीलधारी बासु जी से। नीलाद्री बासु। Yes. Good morning, everyone. And Dr. नीलधारी जी, जस्ट बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा आपका परिचय भी करा दूं सर। Sure. जी सॉरी सर। नीलधारी बासु जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ग्रीन पैनल इंडिया लिमिटेड में सर फाइनेंस एंड अकाउंट डिवीजन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। श्री बासु जी ग्रीन पैनल के एमडीएफ बिजनेस के डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिवीजन से पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं। ग्रीन पैनल से पहले सर सिंगापुर और जापान में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का अनुभव भी उनके कैरियर का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। नीलधारी जी हमें, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट का पूरा एक लंबा चौड़ा अनुभव है और निश्चित ही हमें उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। नीलधारी जी प्लीज सर। Good morning, everyone. And Good morning, sir. Dr. Chauhan, thank you very much for your detailed insights. It was a very relevant views and the data that you have given. What I would like to just start off with that MDF, we are the largest exporter from India. As in fact, only one industry has joined us in the last 4-5 months, Veer Industries from South. Otherwise, we have been the only exporter of MDF for the last 6-7 years. And just to give a relevance of data, last year we were almost more than 200 crore in exports. Vis-a-vis what I saw ply industry exports over the last 25 years. So I think what Dr. Chauhan again said, that if we worked in a mechanized, organized and a structured way, then the exports can pick up dramatically and we can compete in the export market. But the essence is it has to be structured, it has to be supported by the entire input of raw materials, logistics, and only then we can really come on a global stage to beat the world competition. And just to again give you the data, ply industry, I think the number of exporters will be a very large number of exporters. So over 25 years, what they have achieved, we have achieved that in 3 to 4 years by a single company. So the way forward, as Dr. Chauhan said, cost, quality, and I would like to add one more thing, time. Because end of the day, the business cycle, how fast can you deliver the material in the right time, in the right market is the key to exports. So if we now go step by step on the quality cost, let us first come to cost. So typically in wood panel industry, there will be 3 elements of cost. One will be a timber, of course, followed by chemicals. Then there's a conversion cost, which is mainly the heat and electricity, consumables, repair, maintenance, and then of course the addition of our overhead cost. So let's now come on the timber cost. Now the timber cost, as we know, is basically agroforestry, the timber that MDF uses. So we are outside the licensing. We do it, procure it from the forests and the farmers. Here, I think a very important input that we require from the government and maybe from EPT as well is that there is some discussion going on to convert the species of Indian wood for FSC controlled wood, because most of the exports worldwide, they want FSC certified wood. Now, FSC basically has 2 certifications. One is a control wood and the chain of custody. Chain of custody is, of course, a much easier certification. The difficult one is the controlled wood, where you basically tell that the wood species that I'm getting is controlled and it is coming from a controlled wood forest. Now, currently, India doesn't have that. And I understand that there is some discussion at a government level where we are trying to get the agroforestry of all Indian species, which is eucalyptus, poplar, subabul, acacia, into the FSC certified. Now that I think will be a game changer, not only for MDF, but particle board and all people who are using agroforestry. So that's point 1. The second point will be that the availability of wood. Now, as we start exporting and we are getting more number of MDF manufacturers, eventually
larger number of MDF manufacturers will come in because they will start to expand the business. And as Dr. Chauhan explained that worldwide, 60% to 70% is MDF, vis-a-vis in India, it is less than even 10 to 20%. So the use of MDF will go up. We will need more wood. So I think plantation is a key subject for the entire panel industry where we are using wood. The entire panelist is here. You are all one of the most senior members in the wood industry. And I think we have to debate that as India progresses, we are currently at $3 trillion GDP, and with our Honorable Prime Minister's view of taking us to $5 trillion in a very near future. So as the GDP grows, as the economy grows, our income goes up, we will be having new apartments, new furnitures, new places to move in. And therefore, we will be consuming a lot of wood as a country. And there is no short to that because the economy grows, the real estate grows, and the young generation grows, and they will start consuming more number of furnitures, wood products. So the key to this growth is basically we need to focus on plantation at an organized level, because unless we have timber sufficient for the wood industry, neither can we meet our domestic requirement and neither shall we be able to export as well. So my request and humble request will be to the panelists that can we also debate and find out ways to increase the plantation at an exponentially high level so that the cost is controlled. It is a certified wood, which helps us to compete in the export market, as well as we can feed the domestic industry. So two things, one is plantation and a massive explosion of the timber so that we can keep our raw material in control and eventually get it certified so that we can be on a level playing with the other exporting countries like China, Thailand, Indonesia, Malaysia. The second raw material cost component is chemical. I think here there is nothing we can do because it is basically a byproduct of petrochemicals. So I think we buy it from the open market. I think everybody does that. There is nothing we can do here. The third point, of course, is heat and electricity that again changes state by state. So the fourth point is very important, is the logistics cost. Now, we being the largest exporter of wood panel, the biggest headache post-pandemic from 2020 is availability of containers, availability of ships, and getting space on the ships to export the product. So we have orders as on today, say of maybe 4 or 5 months, but we don't have containers to ship. We don't have ships that can take our cargo, and we are stuck. So I think this is more of a broad way to approach it. I think, unfortunately, 95% of the container business is controlled, dominated, and monopolized by China. So India plays a very small role in controlling the containers in which ultimately we export the material. This is not a problem faced by us. I'm sure this is a problem faced by the entire exporting industry of India. We export around $300 billion plus, and this must be affecting everybody. Just to give you an example, we are the largest exporter of MDF in Middle East. We have established a very reputed brand for India in Middle East. And the cost of that import for a 20-feet container used to be $120 just about 2 years back before the pandemic. Today, that is $1,000. Now, just to give an example, the cost when it comes from China, now what they do is they usually hire entire ships. So what they do is they can reduce their cost of transportation to less than 1/10, 1/20th of what we do. We even saw that the cost it takes for taking our material for 6 hours, we are just close to the port 100 kilometers. So for 6-hour transit time, the cost, by that cost, the Thai guys or the Chinese guy can deliver it to Jebel Ali in Dubai. So therefore, there is no way we can compete. So what we'll have to do, we'll have to cut our profits. And the moment we cut our profits, then the export model becomes less lucrative, less profitable for us. So I think this is an international phenomenon. There is many things which we cannot do as a country. But as since Dr. Chauhan is here being a member of the government, I would request that if on a larger scale, if we can find a way where if the Indian industry wants to be competitive with export and we want to take head on with China, we have to find a way out to reduce our cost of logistics, because cost of logistics
has to be within 5-7% of the cost of production. Currently, it is almost 20-30%. That is not feasible. That was the second point. Third point coming on the emission norms, as again that was highlighted. Well, MDF has got a very structured emission norm. We are supplying carb, which is well established, and therefore we export based on carb. We also provide E1, where the emission norm is less. So on emission basis, as long as I'm talking from MDF point of view, we are well placed, we are well structured. I am not very sure exactly how good particle board takes this up, because this is a very sensitive subject in Western democracies, Western countries, where the emission is a very important priority when you export material. I would also like to highlight that when you make a material as a panel, you can export it as a panel, or you can even supply it to the manufacturers and end users who use our product to make furniture, handicraft. Just to give you an example, Jodhpur, Jaipur has a huge handicraft business of wood panels, and we supply them where they make wood panel handicrafts and then export to the Europe. So in Europe, as you know, that they have moved from E1 to now they are talking E half. So they're trying to bring the emission norm down as we go. So I think the Indian industry needs to be geared up. I can say that from Greenpanel, we are completely ready. We have already been exporting, and we are already supplying the emission norm that is required by the export market. The third point, what I want to say is that there is a support that I feel the Indian government can also give, which rest of the world governments are giving to their exporters, which is an export incentive in some form. Maybe this is not the right platform to discuss that, because that comes from the Ministry of Commerce. But I just wanted to highlight that there is a new policy which the government has come out. It is called Retd policy, which was a substitution of the MEIS policy, which was before. Now, in Retd, I think currently, at least the MDF industry gets a very low level of benefit from the government. And I think eventually I will request the panelists here that at some form, MDF being the largest exporter of the wood panel, as we can see, that if we can get a support to take our petition forward to the ministry and increase it to a reasonable, sustainable level to at least counter our cost of production increase and the cost of logistics increase, so that we can be more competitive at the world stage. I would also like to say that the Indian MDF industry, which we have been the sole flag bearer in the last 4 or 5 years, we have established a very good brand image, very good brand in the countries where we have exported, mainly the Middle East and Sri Lanka. And as a fact, now the new manufacturers, they are going in, they just need to say it is an Indian MDF, that is good enough. As long as we take Indian MDF, the brand value is so high that we are getting accepted very easily in the market. So I think that we need to congratulate us as well as overall the ministry to help us to export. But I will suggest that 2-3 things: plantation, the certification required for our controlled wood, and the roadmap will really take us forward and really try to increase the exports in a very substantial way. So if you have any questions which you would like to discuss specifically on the MDF export, I can answer that if you want. Yeah, in fact, I'll just come to the first point which you made regarding the FSC certification. So I think I made my remarks in the beginning that we need to know our narrative, that FSC has been developed in the country in the context when all the timber were procured from the forest, and they were procured because of the deforestation, or you can say illegal logging or large scale logging or unsustainable logging. But in Indian context, we have a different scenario. We are giving raw material from the agroforestry. So I don't know how you will do the branding, but the sustainability aspect, this branding is very important. And we must tell the world that whatever panel products we are making in India, that is coming from the agroforestry, not from the forest. I will tell one instance. I was in the US, then I talked about the forest fire. Then all the panelists, they got very, oh, you have the forest fire. Then I realized that they imagine forest fire from their perspective.
Because in America, the forest fire is ground fire. And here in India, we have ground fire. So we don't get much loss. And there is no loss of the property because of the forest fire. But in their context, when we mention that word forest fire, they imagine that thing. So we need to change the narrative of the world also. That is my point. Otherwise, it is really difficult and so costly to get the FSC certification of all the agroforestry. See, we are getting into, yesterday we made the presentation that we are getting into 90 indicators for indicators, and auditing of those 90 indicators for agroforestry, it is cost. It will have the cost, and auditors will make the cost, and even the cost of any. So we need to change our narrative, and it is good that you are making that branding, and then it should be included in the branding only that these panels are coming from the agri wood. If that kind of things comes, or we make a standard in India and then we say that it is agri wood panel, some kind of thing we have to discuss, because we need to tell the world ours is a different story, and it is different from all the countries, even from China also. What China has done, they have converted their forest land and then they are taking forest plantations. We have not done that. We are getting into the plantation in the agriculture land. So we need to tell the world that this is a different scenario. We don't need even certification of the forest plantation. It is not forest plantation. It is agroforestry. So that differences has to be brought out in marketing. That is my first point. Otherwise, it is up to like government has taken the decision that it is up to the industry and up to the market forces to go for the certification. We are not restricting anybody from the government side. You can go for the group certification of under the FSC. As the paper industry, they have undertaken, because they had a demand in the beginning. They took the FSC certification, then later on they found they are paying much more as a premium to the FSC and not getting the market price. So it is not very beneficial for the industry. It's better that we go for our own branding and our own narrative, because Indian narrative has to be told to the world. See, we are not diverting any forest land. We are not undertaking any forest plantations for supply of the industry. In 88 only we decided that all the industry will go out of the forest. They will procure all their raw materials from outside the forest. So in the Indian industry has come a long way. We need to tell all people in the world, all the suppliers, all market players. So that kind of branding is really required. Otherwise, these people, FSC is very costly, if you see, or PEFC, because they charge on your turnover, and then for retaining the FSC, you have to pay money every year. So it is not it will add to the cost actually. And it is not possible for farmers to get the FSC certification until unless industry comes and then they make in their catchment area the group certification if it is required. If it is too much required, otherwise we should try to have our own way. That is my point on the first one. And next one, last point about the export incentive. In fact, if you can explain in detail what kind of support you want, I have not understood that way, because we get queries from the Ministry of Commerce, but we are not able to give them the inputs. Right. So there was a export incentive given by the ministry in the earlier regime, and it was called MEIS scheme. That had been discontinued last year. So in the beginning of 2021, the government came down with a policy, and they said that we will introduce a new policy. It is called RODTEP, which will benefit the exporters, and for different export sectors, they will give different incentives. So basically, it was a different packaging of the earlier MEIS scheme, which was already existing. Now, in September, they have finally come out with the rates for the MDF industry, which is at 0.5% of the FOB turnover.
our humble request to the ministry is that at 0.5%, the incentive looks quite low compared to what our chief competitors, which is Thailand, Malaysia, China, and Indonesia, are getting. Many of the industries are getting at a level of 2%. I think the laminate has already got 2%, if I'm not wrong. So our humble request is that MDF is a very mechanized structure. It's a very transparent product, which we are growing at an alarming pace. So our humble request will be to the ministry that if they can take up this issue and increase the export incentive to at least the level of the laminates going forward. And we are already in the process of making a presentation to the Ministry of Commerce. Your support from your end will be very helpful for us. Yeah, please give some input and comparative chart with the other industry and other products, so that we are able to make the suggestion to the ministry, to Commerce Ministry. We were looking at this aspect, but we did not get the answer. What kind of, if we have the comparative chart with other products, like it is a green economy. So we need to put our narrative that it is, this sector will be helping the farmers at the end. So we need to put our narrative that way. So please give some data and some comparison. Then we'll certainly give it right to the ministry, even to the Commerce Ministry. Also, we get the query about their inputs. So we didn't have that data. Like anti-dumping, the notification has come. So that time also they asked for that. So if you give us, we will be writing to them. Yeah, absolutely. And the third point, since the entire industry panelists are here, we need to find a way for the plantations, because as the industry grows, and I think the government wants the MDF, particle board, and the mechanized panel industry to grow exponentially. So to grow exponentially, we will need timber, which is our prime raw material. And for that timber, it also has to be cost effective, because ultimately we have to compete with the Thai, Chinese, Malaysian guys in the export market. So if the demand supply, there is a huge mismatch in the next 4 or 5 years and the cost goes up, I don't think we will be able to export. So I think it's a good time that we have a structured way on approaching the plantations, because I think the eucalyptus generally takes 5 to 6 years. So I think the growth period is not too long. So if the industry, along with the government, takes a very methodical, structured approach to going to plantation, I think this will set a very strong base for the panel industry to grow exponentially in the next 5, 10, 20 years. Yeah, I agree with that. Actually, government also wants that, but there is a disconnect between the demand and supply, and that is the issue. So we have proposed to have the at the state level wood council at the state level, where these issues are discussed in detail. But again, the industry also needs to go and come in the way the paper industry has come. So if you have to in your catchment area, because I know for the MDF you require cheaper wood. You don't want higher girth, because that will be costly. That will go to the other industry, and so you want the cheaper wood. For that, if you can promote agroforestry in your catchment area, you can decide how much is the demand, and then there is a sub-mission on agroforestry in every state, and there is a mission director also. So if, and we are ready to help you out and connect with them. So if there is a discussion and the coordination at the state level, so we have written to all the chief secretary to have a state council. But again, the industry, see, MDF is a big industry, and no government can ignore MDF. Okay, you are a big industry, big investment is there. So the forest department and other department will also come there and support you in having your catchment area. But you need to have the nursery part. You need to have certain infrastructure where you can support, or you, and because research institute also would like to do the collaboration with the industry, so that you at least supply quality planting material to the farmers, because that is beneficial to you also. That way only we can reduce the cost. Because see, otherwise we cannot tell the farmers that you sell your produce at a lower price. When the productivity increases,
then only it will be beneficial for farmers also to give those products at a lower cost. So we need to work together actually. India is not China, so we need to work in a different mode actually. So, because China, everything is controlled. In India, it is not controlled. It is generally a free kind of economy. But the government has come up with a submission on agroforestry. There is a agency in the state also to coordinate your efforts. But you also need to come forward, and your raw material department should be able put some infrastructure for the quality planting material to the farmers. And for the quality planting material, you can liaison with any of the research institute or for the improved clones, and then you can take forward this kind of plantations on a larger scale, and then that will be beneficial for both the industry and the farmers together. So that is the way out. I can think that you can get the raw material at the cheaper price. Just to update that we already have a forest plantation and forest department, and we very actively distribute saplings. As in fact, we are trying to increase that to almost 1 lakh plantations immediately on an immediate basis, 1 lakh hectare. So we are trying to work in a very structured way, but then end of the day, we are just one industry, and there will be many MDF manufacturers. Particle board is immense, plywood is immense. So the general consensus has to be at all panels of wood that plantation is a key. Whatever anybody can do, if they can have a plantation, overall it helps the total wood industry of India in all form. Yeah, there is a mismatch actually. If you see in Bihar and Eastern UP, there are lots of farmers, they don't know which species to grow because they don't have the demand. So there is a mismatch between the demand and supply also. Even I was listening to farmers from the Karnataka also. They were also complaining that they have got so much of silver oak and they are not getting the buyers. So day before yesterday, they were complaining before the Honorable Forest Minister. So that kind of disconnect is there. So industry can play a pivotal role in augmenting the raw material, and you can also take help of the digital platform in the IT support app, where you procure your raw material through that, and then you will be able to connect with all the farmers. Anji, Manoj ji. Yeah, you can be able to connect with all your farmers in that way. Perfect. Yeah. Thank you, Dr. Sir, I have something. Yeah. Mr. Niladri, this is Sujatha. So I think Greenply had ventured into plantation since 2013, and today in most of the reports, we find that the raw material cost is the biggest constraint for export as well as even for the furniture industry in the country. Since you had taken initiatives since 2013 for having your own plantations for meeting your demands of productions, what cost reductions or observations you came across this during this 9 years of plantation activities taken up by Greenply? Yeah. So first of all, we have actually demerged from Greenply. We are Greenpanel. Greenpanel, yeah. Okay. So it is basically, we were a part of that group, but we have demerged just last 2-3 years back. As I was telling Dr. Singh, that our contribution to plantation is absolutely minuscule when we look at the bigger picture of the entire industry. I mean, we are doing mainly in 2 parts. We have done it in Nagaland, in Tizit, and we have done in Udham Singh Nagar, in Rudrapur, in Uttarakhand. Yeah. But when we are looking at even our consumption in the industry, so I'll say it is minuscule. I mean, we are doing it, but it is nothing to bring down the cost of raw material. So like when we started the plant in Rudrapur in 2008, I think eucalyptus was costing about 1,500 rupees per ton. And I think currently, I think everybody's buying at 4,500 rupees per ton over the last 10 years. So in a way, it is good. It has increased the income of the farmers, which of course there is the basic intention of an industry overall, which has to be sustainable. The farmers need to feel interested. Their income should go up. The prosperity has to go across everybody. So that has happened. But then end of the day, international market, and as Dr. Singh was saying, China, unfortunately, is a more autocratic form of government. So it is nothing to bring down the cost of raw material. So I will say it is minuscule. I mean, we are doing it, but it is nothing to bring down the cost of raw material. So
so they can control the way they want to do. Unfortunately, being a democracy, or I will say as fortunately being a democracy, we are always more sustainable, but it also brings difficulties. So as a democracy, we will have to work through the compliances of democracy, which is ensuring there's a sustainability to all the stakeholders who are participating in the process, starting from the farmer, because he is the guy who actually grows the plant. Otherwise, the industry doesn't sustain. So he's the first guy. So his income has gone up. We are supporting with the saplings. We will keep on supporting. But our effort, as I was saying, is too small when we look at the entire industry. So unless there is a general consensus, which can only come from the government, that, you know, if there is a wood panel industry, there has to be some form of plantation activity they do. I don't know to whatever level they want to do. Very good example will be like CSR. So CSR, the government made it mandatory on certain group of companies. So whether you like it or not, you have to do it. So similarly, if this thought can come of plantation in some form, honestly, you will be able to discuss this and formulate this better. But this has to be a movement. Otherwise, as Dr. Chauhan said, that we want to grow the exports exponentially. Well, we can grow. We have the machinery. We are intelligent. We are hardworking. But we need timber at a reasonable cost. So if we don't have that, we can't increase exports. I will say we can't even produce the domestic manufacturing. Yes, definitely. So we will I think I'll interfere here. Excuse me. Yeah, I think we have discussed almost most of the things with regard to the subject matter of this webinar. And one of the key takeaways with this particular discussion has been Dr. MP Singh Sahib's very critical and very important, significant guidance that it is now on the part of the industry to create the appropriate narrative with regard to the Indian situation, or how we are dispossessed, if we can say. And it is high time. See, our industry is very much powerful to create our own narrative for the whole world to listen to. And we are running out to be a very powerful nation with regard to our resources, brain power. And we are currently, as far as this industry is concerned, the only thing we are short of is wood resources, which, the last 2 years, probably, out of bad things, there are also a lot of good things which come, because the best thing the COVID has given to this particular industry sector is that there has been a humongous amount of discussions all through last 2 years, to say with regard to industry resources, wood resources, chemical resources, and emissions, and all these subjects. And in this regard, I would like to thank Dr. MP Singh Sahab for the guidance with regard to the indication of creating our own narrative for the whole world, because India is probably the only country in the whole world which uses non-forest timber by default. Because post 1988, I don't think forest resources have been touched upon, especially post 96 Honorable Supreme Court's order. So I think we will go on to the next discussion, because we have Dr. Prasanth, Dr. Ajbani Sahab, and all the IPIRTI scientists, and taking points from whatever Mr. Niladri Basu has suggested. I think we can effectively go on to the next discussion, please. Thank you very much indeed. Thank you very much. Thank you. Thank you, Vaidnathan. I'll just add one thing, that we appreciate the efforts of the Greenpanel, and we can feel their pain, because they are the only one or isolated case who are giving inputs in augmenting the raw material. So and Greenpanel have other industry also to come forward. That is good. And Greenpanel have definitely shown the way as the sole industry, probably we could say, in the MDF sector, which keeps our nation's head high. And we would like to collectively thank Greenpanel and Niladri Basu Sahab for being with us today and sharing his experiences. And it is really a pride for us having you here, sir. Thank you so much. Thank you indeed. I want to add one thing, is that about perspective we are talking, the very name we have given is tree outside forest. Yes. We talk about the TOF. So the very name itself we have given tree outside forest. So that perspective has to change. That's all. Yes, Dr. Shakti Sahab, it's a very important perspective. Yes. Thank you. Manoj ji, आप next person पे जाइए. IPIRTI sir, please. ये जो डॉक्टर हमारे नीलाद्री बासु ने
जो कहा और उसके बाद में सिंह साहब ने, शक्ति सिंह साहब ने जो डिस्कशन, सुजाता जी ने जो डिस्कशन किया, ये कितना इम्पोर्टेंट रहा, ये सभी के लिए जो है बहुत ही कीमती चीज रही है। मैं इंडस्ट्री से ही अब दोबारा आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर प्रशांत एमए। डॉक्टर प्रशांत जो एके ग्रुप मैंगलोर के डायरेक्टर हैं और साउथ इंडियन प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी भी संभाल रहे हैं। तकरीबन 25 सालों से पार्टिकल बोर्ड के अलावा प्लाईवुड की 18 प्रेस की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का गहन अनुभव रखते हैं डॉक्टर प्रशांत, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजारों का उन्हें अनुभव है। तो आज हम इनके अनुभव से जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सपोर्ट के मामले में चीन भारत से इतना आगे क्यों है। Why China is far ahead of India in export of plywood and allied products? बाकी सर आप अपना डॉक्टर प्रशांत साहब को एक टफ क्वेश्चन मिला है। So respected Dr. MP Singh, other senior scientists, senior members of the industry, and other senior members from the wood technology. Good morning to all. So now we have seen many statistics. We have seen what certification required. We have discussed what are the emission norms, etc. Now I'll give you some positive or some inspiration in this. Just we'll go back to China itself. In pre-COVID, China export was about 5.4 billion. That is close to 40,000 crores. And India, as sir has already said, about 239 crores. So you see the opportunity in this. See the scope of development in this. So this is what we have to be excited about, because there is a lot of scope of development in this. 40,000 crores and 239 or 230 crores. So I have some suggestion on this. See, we have already discussed that plywood is in the unorganized sector. So to export, we have to include these unorganized sector people also. So now, if you see from an unorganized sector person's view, he cannot address an export inquiry which comes to his email. He doesn't know what are the various certifications required. So my suggestion first, if we are focused on export, we have to have an export promotion council for us. It can be export promotion council, commodity board. We have development authorities in India. We have 32 such organizations in India for various fields, which has for jute, for marine, for tea, for wool, all like that. We have 32 different organizations. So these organizations, what they should do? They should understand various countries, what certification they require. They should provide details of the various sizes, the standards, the emission norms, including the pallet sizes. These are the pallets that you have to load. These are the number of sheets that you can load into a pallet. This is how a pallet has to be done. So this organized sector people can definitely do, because they would have all the setup. But an unorganized sector might not have all this. So this council or this organization should take initiative in educating all these people. Only if you take the unorganized people also, he can do exports from this country. Now, another good thing is we are entering into an FTA, free trade agreement with UK and Australia. That is a huge scope. They will start buying from India. So we should understand their spec. So this council, along with the other organization, should teach us what is Japan, JPIC or JAS spec, what is British standards, what is E and Europe standards, what is Australia, New Zealand, AS and NZS standards, what is Israel standards, SII. So these are the things that we have to educate them. So this, I feel we should have one single platform where we have from industry, where we have exporters, we have from the Wood Institute, all people from the Commerce Ministry, all those people should be a part of this council.
I think high time that we should have one. We are presently we are under CAPEX, that is under the chemical and allied products. If we have a separate identity, I think we can really focus on this. And today I was just going through the papers. I saw Spices Board has launched its first online platform for exports. What they have done, spiceexchangeindia.com is a new site. It is a virtual platform for spice exports. So all these people from all around the world can see what products we have, what is there for us to offer, who are the exporters in this. This is again we can do SEO, search engine optimization for this, and we can go to the target customers all around the world, and we can reach our message there. So I definitely feel there is a huge scope in this, provided we get all these things in order. See, if an unorganized person, you say, go and tell him that there is an inquiry, he cannot answer that. For that, we should have a preset guidelines for him. This is how we have to do. I think this will definitely be a huge break for the Indian industry in plywood. This is one of the most important inputs that we need to have education for the unorganized sector, that how they need to respond to queries, inquiries, technical data sheets, standard specifications, and they need to also be. Yeah, we have found that many of the unorganized sector, they are also not aware of the palletizing inputs, and it's a big issue. It's rather a big issue, and the point of Export Promotion Council for this particular WBA sector as a whole, be it plywood or particle board, MDF, or any other agro-based panels, this is also one of the key inputs which Dr. Prasanth has given. Dr. MP Singh, sir, please, your thoughts on this aspects. Yeah, thank you. In fact, I had explored that idea. We had seen that all the EPCH, Export Promotion Council for Handicrafts, I've seen their bylaws also. They are basically into a company. So they are a company registered with the Company Act, and they have come out of the government. They are not under the government, and they are working with the government but not in the government. And unless you make, because I have been wanting to make organization Wood Council of India, we had written to the ministry, because there we wanted that the ministry should be minister should be the chairman and look into the policy issues. But here it is but I have seen that other export council, they are basically almost independent of the government, and they are under the Ministry of Commerce. It is guided by the Ministry of Commerce. So it is, and it is doable. Ministry of Commerce, it becomes easy to get anything done. It is a direct contact, and they are concerned with that, and we have a very good minister there also, and they can respond. So only thing is that you need to come few stalwarts of the industry need to come together, have a resolution, and then go for the registration of the company, and then start working. And what I find one thing very discouraging, that all the association in the panel industry, all FIPI or SIPMA or other all organizations, they don't have the capital with them. They don't have the capital to work on, take any project. Individually, as a company, people are ready to support, but not as an organization. So otherwise, we would have loved to have the agri-wood standard from the FIPI side, or that kind of a standard, because that is a very good thing. Already organization is there, you just need a resolution of that organization, and then you can start the work. Otherwise, to create an organization becomes, here also all the organization will be the member in the Export Promotion Council, and the individual members also. But the issue is initial capital is required. That is what I am telling. That you need to start with 10-20 crores. Okay, and then you need to have a model.
In fact, I'm ready to work with that organization to have the agri-wood their branding. Okay, so that you earn some money. Like EPCA, they are earning money from bricks. Bricks, they have made one certification and they are earning money. So you also need to have some model to get money. And in fact, you can issue the certificate of origin also. So from there also you can get money. All the exporters need certificate of origin for any export. So origin of the country. So that kind of certificate also you can issue. So it can be a working model. It can be an economical model, no doubt. So, but you need to have the initial capital, come together, have a resolution. I'm ready to give you the draft because I have worked on that. One draft was with me for a long time. But here I see individually people come forward to support, but as a group, industry are not able to work together and contribute in that organization. Because see, I got a letter from even the paper association also, that even for giving 10-15,000 rupees per month, it becomes difficult for them because they don't have money with them. So, so that is you need to have capital in every organization to take any innovation. That is my point. So it's better that you have we have direct commitment from Dr. MP Singh Sahab that he is ready to work with a definite organization from the part of WP associations. So all the associations are kindly requested to take note of this direct commitment from Dr. MP Singh Sahab, who has always been of ultimate guidance for all of us during the last 2.5 years. He has been, he has been unstoppable, we can say, in his work in order to organize the industry and be our supreme voice with the government of India. And I think the associations will take a note of this and move ahead to form a capital-based group, or rather a registered company, so to say. And then probably we may be able to represent ourselves in a better way with the government institutions and also all our other related supporting institutions. Thank you so much, Dr. Sahab. Dr. Prasanth, any other input which you would like one more to? thing, we were discussing about plantation and that plantation to be come into the FSC link. See, for that we have to closely watch what paper industry has done. Most of the paper industry in India, they have done FM and they have done and all their at least majority they have come under the FSC thing. So we have to closely watch them. Yeah. So in this regard, I have a question for you, Dr. Prasanth. I've got a question. Sorry to interfere. Dr. MP Singh Sahab guided us that we need to form our own narrative. The Indian plywood and panel industries, we need to form our own narrative because all our wood resource comes directly from agricultural plantations. And we are actually, in fact, it is a most significant point that we are by default sustainable per se. So what is your input as an experienced industry person? Is this doable? Can we form a narrative and tell the world that Indian plywood and panels are by default sustainable? Is it possible? See, what I feel is to educate them, we will have a narrative done, and to educate them, it might take time, as I feel. But what we will do is we will try to link this with the FSC existing system. We can actually. Yes, can the association say, can SIPMA form a core committee and say and represent FSC and PFC representatives also within that, and probably create the narrative through them? Can we do that? Can SIPMA or NIPMA or IPMA get into the process immediately? See, now the idea is we have agroforestry with us. We already have an accepted FSC or PFC already there. Now, how do we link this in the most simplest form? That is what we have to find out a formula. See, already most of the paper mills, if they have to export, they should have FSC. So they have already done it. Yes. So I propose, and there is a lot of paperwork they have given to a lot of farmers, and that is how they
satisfy their FSC orders. So Yeah. we can also either utilize the same for us or the same matter, but we have to link it so that it becomes easy. Yes. So I propose that SIPMA initially take the initiative straight away, and then probably we can also include all the other associations across India over a period of time and form one single unit platform, as you rightly pointed out. So ये platform ऐसा एक काम करेगा. See, we will have a lobby. See all the capitalist countries. मैं इसमें थोड़ा सजेशन देना चाहता हूँ. जी सर, जी सर. देखिए पेपर मिल जो है ना, जो भी जितने भी पेपर फैक्ट्रीज है, they have catchment plantation. Almost all have catchment plantation. And here in MDF, it is possible to have the catchment plantation because the rotation will be less. And but for the plywood, you are getting the raw material from different sources. Different sources, exactly. So it is better if you think of the IT solution, like IT, from the IT app, you make a cluster. All the farmers, they will register themselves in the IT platform, and then they become your partner, and then you go for the certification of that group certification. Okay. And then you can have a template, the kind of information which is required by the FSC. You can have those information in that IT app, and when they register with you, they become a member of that group. Okay, so that will be cheaper version. Otherwise, for plywood, it is very difficult to get the farmers from different sources. So whenever they supply you the raw material, it will be necessary that they will be registered in that app. Right. Okay, so they will be, then that will be covered under the group certification. So you have this is a very much doable thing, sir. ये बहुत practical solution है. Platform. Otherwise, it is very difficult. Yes, you are getting raw material from different sources. One village, 5 people. Another village, 5 people. Sometimes it will come at a long interval. Then it will be very difficult to have the group certification. True. So इसके बारे में I would like to invite Ajbani sir, Mr. Harish Ajbani, CEO and Director of Vritti Impex Private Limited, Mumbai, to add his points about the creation of narrative, as well as the Dr. MP Singh साहब ने अभी जो कहा था, the creation of a software platform, common software platform, which can link all the farmers directly and link FSC and PEFC. Hi, good afternoon, everyone. My name is Haresh Ajbani. We are exporting plywood from India from the last 20 years. I'll share my experience, we've been doing for the past 20 years. This company was started as a joint venture between a British-Canadian company and ourselves. So they moved the complete production from Canada to India 20 years back. We convinced them that our cost arbitrage, our knowledge, and our speed, delivery, consistency will be a better trade off than what they are doing in Canada itself. So there are certain obstacles that we have to learn to overcome when we export. See, I agree with Dr. MP Singh and Dr. Chauhan, that narrative has to be created. That we have timber or agroforestry, which is outside the forest. There is a very little awareness of this outside India. Very little. They are not aware of this concept that India has started in way back in 1988, and after 1996, for sure, all the timber which is coming out of India is from agroforestry, and we are the pioneers. Actually, to be very honorable for the country, that we are the pioneers in agroforestry. So this is not aware. So that narrative has to be changed. There are certain standards we have to come up. The ISI and all the other standards, they're very slow to adapt to the reality of the 21st century. Some of the standards are very archaic. We have to learn to be nimble, more quick in our upgradation of our standards, our technology, and our mindset also. See, mindset plays a very important role. Everything is not cost. We may not be the lowest cost producers, but with branding, with certification, with value addition in products, may not be panels, but like furniture components, or going after non-traditional markets and collaborating with the local demand for certain specific
requirements, where that is where we can project ourselves and be very nimble with cost efficiency, not in scale, but in terms of customization. In terms that of is our customization. experience. That's a very good point. And in terms of, yes, customization is very important. And there are certain terminology we have to get rid of. Like we say GLP, glue line poisoning. They will walk away from the meeting only if you say this. You have to use the correct terminology of termicide. Yes. Those things are, for us, it's very local language. When international language is very different. For a small-time operator, like Dr. Prasanth also mentioned, for export, Wood Trade Council is a very, very, very good point. Along with Dr. Shakti Chauhan's thing about mentioning about furniture, or Dr. MP Singh mentioned about certification and quality. Quality is very important. Yeah. If we cannot be the lowest cost producer, let's be a high cost producer for high value addition. Yeah, that's a very good point. Small factories are capable of doing it. That is our experience. That small, clear contracts, clear communication will always give the better trust for the customer. Yeah. And creating a common platform, like for a software, where you have Google GIS tagging of most of the plants can be done. You can have FM on via use of technology, via AI. So these are the things we have to use, which are lower cost. And there are technologies available now, which can help us lower the cost of certification. I think we should have a Indian certification, like Indonesia has a SLK, and other countries have their own certification. We should have our own certification, which is recognized globally. Yeah. So Ajbani sir, what I would like to ask here is, how do you think the industry associations can come together and give a push to this on an immediate scale? See, we are very unique because we are import-based exports. We don't use any of the timber from India. Yeah. So imagine getting all the timber from abroad, getting it here, processing it, and re-exporting as secondary unit, as a secondary processor. Still, we have an arbitrage. Yeah. So imagine if there are certain linkages, certain things, like most of the people have raised the valid points about value of timber, logistics, machinery cost, and the intellectual cost. There is a huge intellectual cost, like something like a CE, conformity of European norms. It's a very small certification, but everybody has to be aware of it. IPIRTI can formulate those things at a very short notice. Yeah. So you can have that kind of a platform for panel producers. Collaboration is very important. Like Dr. Prasanth said, there are small people you can collaborate. Collaboration is the key here for all the industry participants and all the stakeholders. And IPIRTI can be the node for everything. They can be the hub and spoke model. Yes. So so I would like to ask you to share some of your experiences with the problems you have faced with regard to export facilitation from India. Because because there are a lot of viewers. Yeah, today there are a lot of viewers from the industry, because this is a very important matter, subject matter. Yes. And in fact, we had specifically proposed Mr. Haresh Ajbani in this panel, because as far as I was aware, and as he rightly said, probably they are the only 100% importers and 100% exporters of wood-based products in India, and they go for 100% FSC products. And I would like to also, in fact, we ran short of introduction. I directly passed on to Ajbani Sahab. And I would like to also, in between, introduce Ajbani Sahab as a real visionary in this sector. Because at the time of, in the situation when we did not even, India did not even know, India was not even aware of CARB Phase 2. Probably they were the first people to have CARB Phase 2 certification very long back, during, maybe you took it in 2010 or so? Yeah, we were the first people to come to IPIRTI for formula testing in 2004 or 2005, where they had a perforator, and we requested them to put the chamber method because that was acceptable at that time. Yeah, so during 2004-2005, there was a company in India which has come to our institutions for certification. So that's a very big thing, and it is a very visionary approach from Mr. Ajbani. And so I would like to now
seek your wisdom or seek your experiences on what were the issues which you have faced in exports. Yeah. See, Indian companies are behind the curve. Let's face the fact. We are very poor planners at raw material, security, at standards, at looking at the world as a whole market. We are very myopic in looking only at the Indian market of 130 crores, where there is a 700 crores world market. We have to look at scale, or we have to look at niche, where we can be 2,500 companies exporting 1 container a month is 2,500 containers a month. We can look at that aspect, or we can look at one company exporting 250 containers, like 10 companies exporting. So it's the scale which we have to determine ourselves as per our national security, our objectives and everything. We don't want to export and exploit everything in a wrong way. So we have to come to a path which is very unique to India, because we have the population, we have the consumption. So we have to look at that aspect. So we don't have to, people can look at 70-30 ratio, where they have 70% local market, 30% export. So they have to look at a management. You may not get a very big profit margin there, but the exposure to that market is there, and the awareness is there. What standards are going to come in? What new collaboration opportunities are there? So door is open for you to collaborate with other companies from abroad. So you mean to say Indian companies have to have an open mind? Yeah. So you mean to say we have to start getting aware of what are the export possibilities in the first place? Yes, exactly. Just not panel. There's a lot more to be explored. It's just not plywood panels. There are huge scopes in the panel itself. We are only looking at a myopic way of just like Dr. Just like Dr. Shakti Singh Chauhan sahab was telling that there are also, you can look at it in two ways. He was suggesting that you can look at it in two ways. One is the raw boards, and one is the intermediate components, which is a huge possibility in the export segment, and which also gets you higher price than the raw boards. Higher price, more value addition. You can go branding with B2B. Right. So thank you very much for your inputs, Ajbani sir. 1 minute. Yeah. So here I would like to highlight, actually, Mr. Ajbani sir was the first to come to us regarding perforator, which was happening from long back. But once when he started interacting with IPIRTI, he tried to give knowledge about the chamber, the formaldehyde emission for CARB standards and European standards. And through his initiatives during that time only, IPIRTI established the emission chamber. So that we at India also, we will have the test facility in keeping that in 2008, we established the first emission chamber at IPIRTI. And he has been highlighting IPIRTI to get recognized for CARB standards from years. We have been attempting, but still we are in the process. Thank you, Ajbani sir. Thank you. Welcome. Very, very nice inputs from Sujatha ma'am regarding Ajbani sir. Just one more thing. Just one more thing. We have to look at what is going to happen in the future. We have to look at the future to start planning now. There are standards which are going to be upgraded in 3 years, 4 years from now. I think we should be prepared for that. Yeah, so we have to look at the future and start planning now. That is Ajbani Saab's single statement input, critical input into this webinar. And with this, I would like to pass on to Manoj ji for the next sequence of the program. Mr. Vaidyanathan, I just want to put up one thing here is like we are talking about this intermediate products, and I have just want to share here that our furniture sector itself, which is export-oriented furniture sector, it uses 60% of the material which is imported. Okay. And that's where the potential lies. And then that is huge, sir. That is huge. 35% they procure it from unorganized sector. Now that unorganized sector can be converted into organized sector and profitability. So I think this is where we are importing 60% of those components and then re-exporting it. This is where we should try to improvise our industry to become self-dependent or self-reliant on that. Yes, sir. Yes, sir. Very nice input. We are almost importing, we can say, 2/3 of our furniture components into the furniture industry, which is a huge
import volume by percentage. Yeah. So with this, you know, it's a 2 to 3 billion industry, $1 billion industry, furniture yes. industry itself. Yes, yes, yes. So I hope the plywood and panel industries take advantage of this very valid point, as close to 60% of materials are being imported for the furniture sector, intermediate components rather. So with this, you know, I would like to pass for further hosting to Mr. Manoj Thakur. Manoj ji. Sir. Yes. Thank you, sir. मैं बायती सर से निवेदन करूंगा हाँ सर कि गजेंद्र राजपूत जी को सर परीक्षा करते हुए सर आमंत्रित करें सर प्लीज। उससे पहले जो है मैं मिस्टर हरेश अजबानी जी ने खुद अपने मुख से बताया, उस मैं एक बार दोहराना चाहूंगा कि हरेश अजबानी जी वृत्ति इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और सीईओ हैं, जो कि एक इंडो ब्रिटिश कनाडा का जॉइंट वेंचर है और जिसे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने प्लाईवुड एंड एलाइड प्रोडक्ट में 5 बार सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर डिक्लेयर किया है और पुरस्कृत किया है। वृत्ति इम्पैक्स सन 2000 से ही टॉप ग्रेड प्लाईवुड कनाडा, यूएस जैसे टॉप देशों में एक्सपोर्ट कर रही है और नॉर्मल प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग से अलग हटते हुए 100% एफएससी सर्टिफाइड मटेरियल का यूज करते हुए कार्ब P2 सर्टिफाइड प्लाईवुड का एक्सपोर्ट करने पर अपना ध्यान बरकरार रखे हुए हैं। यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, साउथ अफ्रीका, संपूर्ण यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका, इन सभी देशों में वृत्ति इम्पैक्स एक्सपोर्ट करती है। धन्यवाद। हरीश अजबानी जी के विचारों को सुन के मैं डॉक्टर SK नाथ क्या अभी हैं? एक बार हरीश अजबानी जी, आपका टर्नओवर कितना है? About 35 crores. ओके, एक्सपोर्ट कितने की पूरी एक्सपोर्ट होती है? 35 पूरा 100%। ओके, थैंक यू। तो मैं इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए, हालांकि इंडस्ट्री के बहुत मौलिक चीजों को जानकार हैं, तो मैं मिस्टर गजेंद्र राजपूत को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि WTA के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने सन 2000 में FRI से वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में MSc करने के बाद जमुनानगर में प्रगति हाईटेक में ज्वाइन किया और वहां से टेक्निकल हेड बन करके आगे निकले और अब बेसिकली यूपी नजीबाबाद में रहते हुए ऑल इंडिया बेसिस पे अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, स्पेशली LVL और डेंसिफाइड प्रोडक्ट में। गजेंद्र जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपकी आवाज अनम्यूट करें। जी डॉक्टर गजेंद्र सर। धन्यवाद सर जी। आप सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। आदरणीय MP सिंह जी, डॉक्टर शक्ति सिंह जी चौहान जी, SK नाथ जी, मैडम सुजाता जी, आप सभी मानवों के बीच इस विषय पर आज होने वाली चर्चा के लिए मैं विशेष रूप से बहुत उत्साहित हूँ और आशा करता हूँ कि आज इस विचार मंथन प्रक्रिया से वक्ताओं के इस विचार हमें इस निर्णय तक पहुंचने में कुछ मदद करेंगे। मैं विशेष रूप से प्लाई इनसाइट के श्री सुरेश बैठी जी और हमारे आदरणीय श्री SC जॉली, जो हमारे अध्यक्ष वुड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के हैं, उनके अथक प्रयासों के लिए भी आभारी हूँ, जो आज हमारी इंडस्ट्री के इस मुश्किल समय में, जो आज मंदी का दौर है, कोरोना की चुनौती हमारे सामने है, उस वजह से हम सब आज इस मंथन को करने के लिए बैठे हैं और अपने विचार आदान प्रदान करने के लिए बैठे हैं कि हमारी इंडस्ट्री को थोड़ी सी राहत मिल जाए। मैंने जब से 2000 में MSc वुड एंड टेक्नोलॉजी की FRI देहरादून से, उसके बाद प्लाईवुड की इंडस्ट्री में मैं रिसर्च डेवलपमेंट और प्रोसेस कंट्रोल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हूँ और मुझे जहां तक मैंने बहुत सारी अपनी इंडस्ट्री की प्रोसेस की जो समस्याएं होती हैं उनको समझने का, सुलझाने का मौका मिला है और मैंने देखा है कहीं ना कहीं हमारे सारे जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं
वो ये इच्छा जरूर रखते हैं कि हम भी एक्सपोर्ट करें, परंतु वो एक्सपोर्ट कर नहीं पाते हैं। उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें उनको आती हैं। फर्स्ट थिंग होती है कि जो माल की गुणवत्ता हमारे एक्सपोर्ट के हिसाब से चाहिए होती है, वो उसके हिसाब से बना ही नहीं पाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट को ग्लोबल क्या देखता है कि इंडियन मार्केट में क्वालिटी तो वो मानते हैं हमारे ग्लोबल प्रोडक्ट के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से, और जो रेट मांगते हैं वो कहते हैं कि इंडिया चीपर है। उससे क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर हैं वो डिस्करेज होते हैं कि उनको रेट नहीं मिल नहीं पाता, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ पे किया है। तो लगभग हमारी 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अधिकतर शेयर जो हमारा नेपाल 19%, सऊदी अरेबिया 12%, यूएई 10.5, थाईलैंड 5.6 और भूटान 5.49 इन जैसे देशों में हुआ है। और यदि हम इसमें अगर डीपली जाएं तो देखते हैं कि एक्सपोर्ट में जो हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो प्लाईवुड, पैकिंग प्लाईवुड है, शटरिंग प्लाईवुड है, पार्टिकल बोर्ड है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो स्पेशलाइज हो, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट भी है वो एशिया पैसिफिक में ही है, यूरोपियन देशों में काफी बहुत कम है। जो मैं बताता है कि हमारे वातावरण में हमारा पूरा विश्व हमें एक सस्ते माल के रूप में जानता है। यदि हम चाइना की बात करें अपने परिप्रेक्ष्य में, तो चाइना क्या करता है कि एशिया पैसिफिक में काम करता है, अपने जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है यहाँ सेल करता है, और यूरोपियन कंट्री में भी जो है, यूरोपियन कंट्री में अपने हाई एंड प्रोडक्ट सेल करता है। तो उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों उसकी डिमांड उसको मैच हो जाती है और वो विजेता बनकर उभर रहा है। अभी जैसे हम बात करते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो फेस करती है क्वालिटी की वजह से। हमारी इंडस्ट्री की बहुत सारी समस्याएं भी हैं। उसमें सबसे पहली चीज है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारे पास एग्रो फॉरेस्ट्री वुड है। एग्रो फॉरेस्ट्री वुड होने की वजह से पहले जो हमारे आसाम वगैरह में जो प्रोडक्ट बनते थे वो हार्डवुड से बनते थे, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। और जो हमारे एग्रो बेस्ड फॉरेस्ट्री से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल होने की वजह से वो डे बाय डे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हुई है। सेकेंडली, प्रोसेस पैरामीटर जैसे रेजिन मैन्युफैक्चरिंग, फेस विनियर की थिकनेस वगैरह कम होना, या फेस विनियर के लिए अच्छी क्वालिटी की वुड नहीं होना, ये सारी चीजें भी हमारी इंडस्ट्री को, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करती हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान हम इनके ऊपर भी देंगे तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी और हम एक्सपोर्ट करने में सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी पैनलिस्ट को ये आग्रह करता हूं कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो है, जो हमारे इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एफएससी की प्रॉब्लम अभी काफी जैसे डिस्कस हो रही है, तो उनको रिमूव किया जाए। धन्यवाद राजपूत जी। धन्यवाद। आपने जमीन से जुड़ी हुई कुछ सच्चाइयों को सीधे शब्दों में बताया। मैं डॉक्टर सुजाता को आमंत्रित करूं उससे पहले मैं हमारे ट्रबल शूटर मिस्टर वैद्यनाथन हरिहरन का थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा कि WTA के सीनियर एग्जीक्यूटिव मिस्टर वैद्यनाथन प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के भी ट्रबल शूटर है। लो एमिशन रेजिन और प्लाईवुड में नो एडेड फॉर्मल्डिहाइड NAF की स्पेशलाइजेशन के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने इसी संदर्भ में एक इंस्टीट्यूट अपना
बनाया है कल्पक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन कोचीन में स्थित है। हाई क्वालिटी प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, कोयर और बम्बू कंपोजिट्स में इनकी एक्सपर्टाइज है। तो वैद्यनाथन जी पहले से जुड़े हुए हैं, इनका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुजाता को आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर सुजाता साइंटिस्ट हैं। 1999 से IPIRTI एडेसिव टेक्नोलॉजी डिवीजन में प्लाईवुड और बेम्बू मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिसर्च में सहयोग दे रही हैं, खास करके नेचुरल ओरिजिन के विभिन्न रिन्यूएबल मटेरियल से बायो एडेसिव डेवलप करने में, उद्योगों में विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग समस्याओं का समाधान फील्ड विजिट द्वारा करती हैं और नए उद्योग लगवाने में भी सहयोग करती हैं उनका बराबर। डॉक्टर सुजाता का 150 से अधिक रिसर्च पेपर के अलावा सिंथेटिक रेजिन एडेसिव नामक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। इनके द्वारा अप्लाई किए हुए 5 पेटेंट मिल चुके हैं और दूसरे 5 पेटेंट अप्लाइड हैं। डॉक्टर सुजाता जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। Thank you, sir. Good afternoon to all of you. I would start with regarding the points raised by Dr. Prasanth sir also. This is regarding the organized and unorganized sector in our country. See, one way of trying to improve our export is, as rightly said by Dr. Prasanth sir, I do agree that we need to get awareness in the unorganized sector in such a way that they also have a good standard quality of products, so that we boost up the export. So actually, if we look into, definitely from the last 10 years, there are improvements between the organized and unorganized sector percentage. If I have to figure out, in 2010, only 10% were organized sectors. And today in 2020, about 30% are organized sectors, as per the ITO report projected recently. So from 30% organized sectors, we should try to improve upon that. 75% we achieve. In the sense, these unorganized sectors, presently what they try to do, as we say, our demand and supply gap is existing for our own Indian market. So in that case, what happens is, all the manufacturers cannot think about export of our panel products. In case if we generate awareness in the unorganized sectors, that if they try to utilize the entire capacity installed by them, they can meet the Indian market demand, as well as they will have the part of justification for improving the national economy through export. So this is one of the first point I would also like to endorse. And from my point of view, the challenges which I have enlisted few, wherein even from Greenpanel it has been represented, the raw materials in India is projected to be 25% more expensive. And apart from the raw material, it is also stated that the transport and logistic cost in our country is very high, reflecting infrastructural inefficiency. So what we need to do here is, of course, there are a lot of discussions happening. Even Dr. MP Singh sir has suggested, wherein we can try to reduce the raw material plantation cost on national basis. Apart from the raw material growth, there are other points which we need to address also. One is the transportation, the logistic cost. So, and when the timber has to reach the industry, the landing cost has to be reduced for us. It should be economic, reduced in the sense, even it cannot be under loss. So this is one of the challenges which we need to look upon. And one more thing, what is projected in most of the reports is the miscellaneous overheads are 3-fold times larger in India than China. So we are trying to compare the export market of China
and we are trying to compete with China. In that case, our miscellaneous overheads also have to be minimized. And what happens is even our tax implication, tedious license control measures are leading to administrative delays, longer duration for seeking custom clearance. All this adds up to the overheads cost. So we need to have policies so that the overheads cost are also reduced to boost up our export market. And high import duty rates on raw material also leads to the incremental cost. So here, certain measures have been taken up by the government. Still, instead of having imported timber, we need to concentrate more on the agro timber, as Dr. MP Singh suggested. We need to boost up our national economy. So let us try to promote the plantation activities. And the most important aspect, which I would be dealing as a technical person, is the inadequate enforcement and awareness regarding the carcinogenic nature of formaldehyde emission among all the manufacturers and customers, and lack of awareness and the need of standards among the industry and consumer standards is one of the challenging aspects. And always there are more scopes for us to understand how we can address these formaldehyde issues. See, everywhere we speak about formaldehyde emissions, but there are certain things which have to be created awareness among the people is when you manufacture product, this formaldehyde emission does not remain same in all the products. So in India, we are doing two kinds of resin system. If we say phenolic resin and the formaldehyde resin, and just now Dr. Vaidyanathan says no added formaldehyde adhesives or low formaldehyde emission adhesives. There are various adhesives being employed. In these adhesives, if we look into the international forum, phenol formaldehyde resin bonded products are considered to be ultra low formaldehyde emitting products as per CARB. So when they say ultra low formaldehyde emitting, there are factors that the industries have to adopt and optimize resin formulations to achieve the desired resin characteristics where this emission can be less. So most of the industries here also would have happened to come across when we visit some of the industries, even in when they're manufacturing phenol formaldehyde resin, there are a lot of emissions. That happens due to the defects or in the resin formulations which they have adapted. So the challenge, what we would try to project here is all the industries are capable to have their own resin plant and they are involving their time for production of resin. Only thing where they can meet to the international quality standard is adapt the right resin formulations. Although phenolic formaldehyde are exempted for emission class, try to keep up the optimized resin formulations. Cooking temperature should be maintained ideally. See, some people, what they try to cook quickly, you can raise the temperature. To have some freaking time, you can reduce the temperature and continue for long. So here what happens is when you try to cook the temperature, the emission of formaldehyde will be very high from the finally discharged resin. So technically, we need to understand that the formaldehyde emission is not a very big issue where our industry cannot solve. Everyone can do it, okay? And only thing is, all the industries are not having the sufficient knowledge. Like some people are scared to think about export also. Why they are so scared is because they feel that they are burning in the eyes even when they are manufacturing. But if they can optimize the adhesive formulation and resin formulation in the right way, our industry can definitely qualify for the export of final products. One thing here, as a technical persons, we would like to give you, if we have to improve our export, one need to understand the different test methods. See, each country has different emission standards for formaldehyde emission, as well as even the mechanical strength properties also.
always in various forums, IPIRTI also has tried to address about the formaldehyde emission classes at various countries. But at the same time, you need to equalize the strength property of that particular country. Here, sir, I would like to share about this test formaldehyde emission limits so that it can be viewed also. Is it visible, sir? Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So here, if you look into, there are various test methods actually for formaldehyde emission. Here we have one minute, sorry. No, I'm sorry, if you can put it on slide mode, you know. Yeah, sure. Slide mode. I'm just putting it. Is it? Yeah, thank you. Thank you. Oh, yeah, okay. it's good. So good. Here, generally there are various test methods for determining the emission of formaldehyde from panel products, irrespective of plywood, particle board, or medium density fiber board. So just to give about perforator method, this was the oldest method which existed for determining the total free formaldehyde content from any kind of panel products. The next came the gas analysis method, desiccator method, chamber method. So here, if we look in, and even the formaldehyde emission chamber method was the last which has been adopted by European as well as for CARB standards. When we look into the standards, every European standards have their own different classes of testing, like they adopt formaldehyde emission by perforator method and small chamber method as per the European ENV 7171 test method or ISI 12406. And for perforator method, it is EN 120. Here, we at various forums, IPIRTI has been projecting that the test methods which we adopt cannot be, the value which we arrive cannot be correlated with the other test methods. Reason, although certain correlations have been arrived, but practically, if you look into, such things cannot happen because the moisture parameters, humidity conditions, maintaining everything is different for each parameter. So one, if you're exporting for Europe, definitely one has to follow that. They qualify the European small chamber method limits to 0.124 milligram per meter cube for E1 emission class, greater than 0.124 E2 classes. And perforator method is common for most of the countries where you have less than 8 milligram for E1 class and greater than 8 for E2 emission classes. And in European classes, if you are trying to get the emission class, one thing what I was trying to tell you to give knowledge for unorganized sector also is, see, people always feel that the mechanical properties requirement by the other countries is more stringent. But the real fact is, in Indian standards, we have very stringent mechanical properties. So we have to create a forum that even if they achieve, there are 3-4 grades of MDF and particle board if you compare to European standards. So if you test any product, if it qualifies for one of that product for that particular grade, that industry can build up their export. So this is a way we can try to generate awareness also to boost our export. And the other is what we were mentioning earlier also, we happened to listen from some of the panelists regarding the Australian and New Zealand standards. Here in Australian and New Zealand standard, this is the only standard which has E0 emission classes. Because at IPIRTI also we have tried to receive many inquiries. We need E0 emission level, this is E0 emission formaldehyde panel products. But to specify only Australian and New Zealand standards have prescribed E0, E1, E2, 3 emission classes. And they have more relevance of testing only by desiccator method as that of Japanese. So only by desiccator method testing, if you can qualify the formaldehyde value of 0.5 milligram per liter, they are categorized under E0 level
And for E1 level, less than or equal to 1, E2, 2, and E3 is greater than 2. So the Australian, New Zealand standards emission classes, we have 4 categories. European have only 2 categories. Carb. When we are talking about carb, I think this is the most demanded when you have to export to US. So as per carb, you have all the kinds of test methods being adapted in the standard itself. They can use desiccator method, gas analysis method, and chamber method for determination of formaldehyde limits. Their criteria is not E0, E1, E2. In CARB standard, they just specify you what is the allowable formaldehyde concentration. That is for plywood 0.05 ppm, medium density fiberboard 0.11 ppm, tin medium density 0.13 ppm, and for particle board 0.09 ppm. And coming to Japanese standard, it is the desiccator method of testing, where we have don't prescribe in terms of E0, E1, E2 emission. They prescribe in the form of F1 star, F2 star, F3 star. So F2 star is 1.5 milligram per liter. F3 star is less than 0.5 or 0.07. And F4 star is called the super E0, as that prescribed for this New Zealand Australian standards, which is less than or equal to 0.3 milligram per liter. So these are the standards which are existing in other countries. If we really look into, many people have the notion that CARB specifies E0, E1, E2. Please try to take out that from your mind. CARB states you the allowable formaldehyde concentration. E0, E1, E2 classes are in the Australian, New Zealand standards. E1, E2 for European standards. Japanese gives for F2 star, 3 star, 4 star. So these are the emission clauses. So as I told you, the improvements which our industry can do is in the resin formulations, apart from the raw material cost and the logistic cost. You can try to incorporate some scavengers in the urea formaldehyde resin to minimize the cost. And apart from the resin being used, industry also have to take a note that the pressing temperature in the hot press also adds up more to liberate that free formaldehyde. So adhesive formulation and the complete processing parameters adapted by the industry should be optimized. So here, what I would try to suggest is to boost our export, we need to adopt process parameters to achieve the strength properties and the formaldehyde emissions with relevance to each country standard. And the production cost should be in par with the lowest price when compared to the other exporters. So when I say lowest price, it is not for any grade of products. The grade of products which qualifies to XY, let me say, if you are targeting a even emission grade product to be exported from other countries, what is the marketing price of that even emission should be noted, and we should be compatible to achieve that lowest price. And the panel industry in India should promote farm and agroforestry for augmenting indigenous raw material availability. At the same time, we should try to develop and ensure enforcement of regulations to reduce the formaldehyde levels during manufacturing. These are my points which I had to project for you today. Thank you. If you have any questions, I'll be free to answer. Thank you, Sujatha ma'am, for your wonderful, concise, comprehensive and precise set of points given to the industry in a very fine manner. Sujatha ma'am is also my teacher at IPIRTI for the information of all panelists. I'm really honored to be honored that she is present here along with us in this panel. So in this regard, ma'am, if I can just interrupt for a moment. Yes. You were mentioning about a no added formaldehyde resin before. So
is this basically the E0 which Europe is talking about, and has this been certified or patented from your end? This is to Mr. No, Vaidyanathan. we have not, sir. We have no added formaldehyde adhesives, Mr. Vaidyanathan. It is actually a kind of soya flour-based adhesives, right, Vaidyanathan, sir? Ma'am, actually, I'm working on hot melt adhesives. Okay. So, but in it is a heating and cooling system. It is a heating and cooling system which I'm currently working on, because it has given some benefits on the cost parameters, cost of the things. Here, Mr. Niladri, if you have talk about no added formaldehyde adhesives, as per US studies, they have stated this. They have developed soya-based flour incorporating the other ingredients without formaldehyde in it, which is termed as no added formaldehyde adhesives. It is basically a soya adhesive. Okay. Yeah. And as per Australia, New Zealand, E0, even E2, it is not that, see, E0 level can be achieved even with other resin system, as I told you. American standards say no added formaldehyde adhesives, phenolic resins, ultra low formaldehyde emission, phenolic resins are classified in American standards. So this ultra low formaldehyde emission adhesives are the adhesive which qualifies for E0. If you have a cost-effective phenolic adhesive system, even that qualifies for a E0 emission adhesive. Thank you. मैडम मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे। Yes, जो मैं बेसिकली जितने भी वर्क है मेरा वो डेंसिफाइड के ऊपर है, जिन प्रोडक्ट की हमारी डेंसिटी अबाउ 0.95 to 1.25 और 1.35 डेंसिटी होती है। Yes, sir. तो जो भी आपने अभी फॉर्मल्डिहाइड का एमिशन का चार्ट आप शो कर रहे थे, उसमें प्लाईवुड बेस है सारा। तो क्या उसमें कोई डिफरेंस आएगा कि अभी जो पैरामीटर चेक होते हैं वो प्लाईवुड के बेस पे ही होते हैं? कॉम्प्रैक्ट का सर आपका डेंसिटी आप ज्यादा किए हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। Okay, when you are making a high density product, it is termed as a compreg. Compreg cost will be definitely high because in a plywood you will have a 8 to 12% of compression happening. Okay. For a high density product, you will have to achieve 25 to 40% of compression too. Okay, so there itself you will understand the raw material cost will be so high for you to achieve that targeted thickness. And one more, we are trying to impregnate resins also. So always additional cost will be incurred for making compreg, and it is a specialty product which is equivalent to that of metal properties. Okay, so we should not compare with the plywood cost. It is a specialty product which is compatible with the metal. So if you compare for the final end use application of compreg, definitely compreg final product cost will be lesser than the existing metal based products being made out of it. नहीं मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे हम जो हमारे हाई डेंसिटी प्रोडक्ट है हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनका जो कार्ब सर्टिफिकेशन के बेस पे जो है वो उनका फॉर्मूलेट एमिशन किया जाता है, तो प्लाईवुड में मेजर किया वो किया जाता है उसका काउंट। तो क्या उसके लिए कोई अलग स्टैंडर्ड है क्या? कॉम्प्रैक्ट का अलग स्टैंडर्ड नहीं है सर। See, all kind of plywood they just categorize because density is not specified. नहीं उसके लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना ऐसा। Generally, almost all the compregs are made only with the phenolic resin. Okay, because it goes for high-end applications, and definitely apart from American where they say ultra low emitting, other countries phenolic resins are exempted also from formaldehyde emission classes because they don't release much emission. Yes, madam. So you can always qualify that to be ultra low formaldehyde emission category only. Thank you, ma'am. थोड़ा सा actually जो अपना PF region होता है वो even grade में आता है अगर हम पैरामीटर कंट्रोल करें। Actually, yeah. Sir, I have one of the industry who is interacting from Jaipur actually. They are also making compreg, and their final product is the knitting needles. Okay, from the compreg which they make. They also get the carb certification for the compreg product. So there they have adopted the same kind of desiccator method of testing only, and the value is compared with that of plywood. इसमें मैं भी ऐड करना चाहता हूँ।
रजपूत जी इसमें मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि फॉर्मल्डिहाइड एमिशन के लिए डेंसिटी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड नहीं है। Formaldehyde emission is done on the product, whichever product you make using formaldehyde based resins. मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम उसके 100 ग्राम के बेस पे लेते हैं ना बाय वेट प्लाईवुड में, तो प्लाईवुड की डेंसिटी कम होती है, तो उसमें जो उसकी क्वांटिटी है रेजिन की वो कम होगी। इसमें जो है पूरा रेजिन इम्प्रेग्नेट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो रेजिन की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से फॉर्मल्डिहाइड एमिशन ज्यादा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। whichever प्रोडक्ट आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें फॉर्मल्डिहाइड एमिशन इज वन सिंगल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। जितना भी रेसिन आप यूज करेंगे, इवन इफ यू यूज जैसे कि 50% रेसिन उसमें प्रोडक्ट में है, तो भी आपको ये एमिशन स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मली मेंटेन दैट इज फॉलो करना ही पड़ेगा, पास करना ही पड़ेगा। वो प्लाईवुड के बेस पे ही होगा सर। आपका क्वांटिटी के हिसाब से नहीं चलता है, आपका रेजिन जो बना है ना, अगर फ्री फॉर्मल्डिहाइड आपके बेसिक रेजिन में ज्यादा है तो आप 10 ग्राम देने पे भी फ्री फॉर्मल्डिहाइड एमिट होता है, 100 ग्राम देने पे भी एमिट होता है। तो आपका ऑप्टिमाइज रेजिन जो आप इस्तेमाल करेंगे से होता है थोड़ा। हाँ, तो इसमें ये एमिशंस में मैं एक चीज इनपुट ऐड करना चाहता हूँ सुजाता मैम, कि इसमें कि फॉर्मल्डिहाइड एमिशंस इज बेस्ड ऑन दी प्रोडक्ट, तो वो शायद इसमें कुछ कंफ्यूजन है सर्टेन इंडस्ट्रीज में कि फॉर्मल्डिहाइड एमिशन इज एक्चुअली ऑन द प्रोडक्ट, व्हिचएवर प्रोडक्ट यू मेक, हाउ मच एवर रेसिन, जितना भी रेसिन क्वांटिटी उसमें जाएगा, तो फिर भी द प्रोडक्ट हैज टू मेंटेन द सेट एमिशन लेवल्स, उतना ही। whether it is compact or low मीडियम डेंसिटी, सॉरी। ये फॉर्मल्डिहाइड एमिशन के जो स्टैंडर्ड्स है वो ह्यूमन हेल्थ को लेके बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट एमिट करता है ह्यूमन हेल्थ की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। तो कोई भी मटेरियल एमिट कर रहा है तो ये ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर करता है उस हिसाब से रहेगा ये। करेक्ट। मनोज जी आप बताइए प्लीज। सर नमस्कार सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, लेकिन थोड़ा सा टाइम आज कम है थोड़ा सा। सो अब मैं अपने अगले पार्टिसिपेंट को आमंत्रित करता हूं। आनंद सर से मैं निवेदन करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें लेकिन इससे पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट से आनंद जी का एक छोटा सा परिचय करा देता हूं। सर आनंद नंदवार जी साइंटिस्ट है सर, IPIRTI बेंगलुरु के, एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सर सिंटेक एंड प्रोडक्ट एप्लीकेशन डिवीजन के। आनंद सर। सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद। तो जैसे आप जानते हैं ये IPIRTI is very actively involved. I am audible? So I think बिल्कुल सर। So as you are well aware that IPIRTI is actively involved in developing, devising and amending standards. और केवल हम अमेंड ही नहीं करते हैं उसको, हमारा निरंतर प्रयत्न ये रहता है कि उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर लाए। तो ये हमारा केवल अकेला का जो इंस्टीट्यूट रहते हैं उनका अकेले का प्रयास नहीं रहता, पर साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स और यूजर्स भी हमारे साथ चल के ये BIS का काम करते हैं। तो जैसे भारत में आप जानते हैं कि BIS is the national standardization body. Similarly, other countries are also having their bodies. Like आप जैसे आप देखते हो GIS स्टैंडर्ड रहते हैं जापान में, EN रहता है यूरोप में, AS स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलिया में फॉलो करते हैं, और ISO स्टैंडर्ड इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे विश्व का स्टैंडर्ड को ध्यान में देता है। So with respect to panel products, there are mainly two types of standards which are relatively more important. अलग प्रकार के स्टैंडर्ड भी रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो ज्यादातर स्टैंडर्ड जो रहते हैं वो रहेंगे या तो मेथड ऑफ टेस्टिंग में या तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड रहते हैं। कोड ऑफ प्रैक्टिस और अन्य प्रकार के स्टैंडर्ड भी ऑल्सो वी फाइंड इन प्लाईवुड, बट दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स आर रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट। अब जब बात करते हैं मेथड ऑफ टेस्टिंग की, तो दिस आर बेसिकली डिस्क्राइब्स हाउ द प्रोडक्ट इज टेस्टेड, उसका आपको किस प्रकार से लोड अप्लाई करना है और उसको किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन करना है। तो इफ यू सी कंपेयर विद अदर स्टैंडर्ड्स, तो आप देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड जो है लगभग सिमिलर, दे फॉलो द सिमिलर मेथड्स। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड को थोड़ा साइड में रखिए क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स है बाकी, लेकिन जो आमतौर पे फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है बेसिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड सिमिलर स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। जैसे कि हम MO और MOE निकालते वुड के लेते हैं 48 टाइम्स थिकनेस लेते हैं स्पैन की। अब US वगैरह जो कंट्री है वो 20 टाइम लेती है, 24 टाइम लेती है, पर फाइनल कैलकुलेशंस बिकॉज इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, इसमें फाइनल प्रॉपर्टी में ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो अब लेकिन फर्क कहाँ आता है हमें देखना पड़ेगा। फर्क आता है जहां हम प्रोडक्ट को कंडीशन करते हैं।
सो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से द प्रोडक्ट को पहले हम इंडियन एम्बिएंट कंडीशन में उसको पहले हम कंडीशन करते हैं, जो है 27 डिग्री और 65% RH है, जबकि जो कि ये कंडीशन इंडिया के एम्बिएंट कंडीशन है। लेकिन यूरोप में आप देखेंगे तो इन प्लेस ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस दे फॉलो 20 डिग्री सेल्सियस एंड 65 ±5% RH, जो उनकी एम्बिएंट कंडीशन है। जो मटेरियल को जहां अपनी जिंदगी बितानी है तो उस कंडीशन में उसको मटेरियल को ला के हम टेस्ट करते हैं। अब ये जो जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं वुड टेक्नोलॉजिस्ट की जो टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट होता है जैसे बढ़ता है तो स्ट्रेंथ ऑफ वुड डिक्रीजेस लिनियरली। और जैसे आप फॉर्मल्डिहाइड का भी देखेंगे, बात करेंगे, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एमिशन ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इवैपोरेशन वगैरह दूसरी जो प्रॉपर्टीज रहती है आम शब्दों में वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो जो भी यहाँ जरूरत पड़ जाती है कि जिस कंडीशन में हमको सैंपल की अपनी जिंदगी बितानी है तो उस कंडीशन में सैंपल को रखा जाए और टेस्ट किया जाए। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स आर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, जो कि बताते हैं कि क्या मटेरियल यूज करना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है। आई एम स्टिल ऑडिबल ना? सो आई ऑडिबल सर, ऑडिबल। Yes, okay. So other type of standards are are product standards. So this gives the description of what materials is to be used, कैसे मैन्युफैक्चर करना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी। तो यहाँ पर हार्मोनाइजेशन का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। और जैसे इंस्टीट्यूट लाइक IPIRTI, IWST, FRI वगैरह जो हैं और मैन्युफैक्चरर्स और यूजर्स सब मिलके इनके समन्वय से जो स्टैंडर्ड बनते हैं, जो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड रहते हैं। तो इसमें जैसे हमारा हमेशा निरंतर प्रयास ये रहता है कि स्टैंडर्ड को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबरी में लाएं। या तो कई बार देखा जाता है कि जैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन MDF वाज वेरी स्ट्रिंजेंट 2 years बैक, सो IPIRTI had taken out a study to bring this standard in line with other BS, EN and ISO standards, and now we are having Indian standard on MDF which is in line with ISO standard. और इस तरह का हमेशा प्रयास लगा रहता है। जैसे और जरूरी है कि हम जो भी इंडियन स्टैंडर्ड जो हम हार्मोनाइज कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, जो प्रोडक्ट रहेगा जो न केवल भारत के लिए उपयोगी रहे, उसको हम एक्सपोर्ट भी कर पाए, उस प्रॉपर्टीज को हमें अटेंड करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस विषय में जैसे हम BIS की भी जो मीटिंग रहती है उसमें हमेशा हमें इक्वल नंबर ऑफ लाइक टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, आपके मैन्युफैक्चरर्स हो गए और यूजर्स वगैरह के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि BIS जो है इट इज अ बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो जो भी स्टैंडर्ड बनते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कंज्यूमर के हित का हम ध्यान रखते हुए स्टैंडर्ड बनाए जाए, न केवल टेक्नोलॉजी को ले और मैन्युफैक्चरर्स को ले। तो मैन्युफैक्चर में जो हम बताते हैं कि जैसे क्या आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसका इनकॉर्पोरेशन कैसे करना है, उस हिसाब से भी स्टैंडर्ड हमेशा अमेंड होते रहते हैं। तो इसी के साथ कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपना वार्ता खत्म करता हूँ, और किसी के पास कोई प्रश्न हो तो कृपया मुझे पूछ सकते हैं। सर बहुत प्रिसाइसली आनंद साहब ने पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द कंडीशनिंग ऑफ पैनल्स बेस्ड ऑन द रीजन ऑफ एप्लीकेशन. No, it is always better to test panels based on the region of application. That is what Anand sir was wanting to present here. Thank you so much, sir, for the precise input given to the wood industries. So, Manoj ji, Mr. Anand actually research and development में 20 साल के experienced साइंटिस्ट हैं। इनका एक्सपीरियंस जो है वो टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वुड एंड अदर लिग्नोसेल्यूलोजिक मटेरियल के ऊपर है, और डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट मेथड एंड प्रोसीड्यूर्स रिलेटिंग टेस्टिंग ऑफ पैनल प्रोडक्ट्स। इस चीज पे इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रखा है, इसी वजह से इनकी ये सारी जानकारियां जो है इतनी महत्वपूर्ण रही। मैं अगले पैनलिस्ट डॉक्टर रंजना यादव को इनवाइट करना चाहूँगा। जो डॉक्टर रंजना यादव साइंटिस्ट हैं, जो IPIRTI के मोहाली की ऑफिसर इंचार्ज भी हैं। इन्होंने अप्लाइड केमिस्ट्री में PhD करी है और IPIRTI में 2010 में ज्वाइन करने से पहले DMSRDE कानपुर में रिसर्च एसोसिएट थी। इनकी एक पुस्तक के अलावा 6 पुस्तकों में प्रत्येक में 1 चैप्टर प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर रंजना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नमस्कार सर, सभी हमारे पैनलिस्ट को और सारे श्रोतागणों को मेरा नमस्कार।
नॉर्मली सभी लोगों ने सारा एग्रो फॉरेस्ट्री सर है, फॉर्मल्डिहाइड एमिशन, सभी लगभग चीजें डिस्कस ऑलरेडी हो चुकी है सारे पैनलिस्ट। तो मैं बेसिकली थोड़ा सा इंडस्ट्रीज की चीजों पे डिस्कस बताऊंगी कि बेसिकली जो मैंने इंडस्ट्रीज अपने नियर अबाउट विजिट की है नॉर्थ इंडिया में रहते हुए, और जो तो उनमें बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ज्यादातर इंडस्ट्रीज की, क्योंकि समटाइम्स क्या होते हैं एज ए इंस्टीट्यूट हम उनको काफी चीजें सजेशंस देते हैं, बट डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रीज कितना अडॉप्ट करती है। तो मैंने यहाँ देखा है इंडस्ट्रीज की क्या सिचुएशन होती है सर, वो समटाइम्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर भी चेंज कर देते हैं कि अभी वेदर हॉट है तो अभी हमें क्या चीज यूज करनी चाहिए, अभी वेदर कोल्ड हो गया तो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। बट हमारा क्या है, रेजिन वेदर पे नहीं डिपेंड करता है सर। रेजिन के जो भी फॉर्मुलेशंस हैं जो भी है वो हमें एज पर जो भी क्राइटेरिया है एज पर फॉर्मुलेशन वही करना है। उसको तो इससे नहीं मतलब है ना कि सर यहाँ का वेदर चेंज हो गया तो हम उसके अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी कर दें, ये टेम्परेचर कम कर दें। तो सर जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे यहाँ पे विंटर वैकेशंस पे हो जाता है, विंटर के टाइम्स पे तो मॉइस्चर कंटेंट जो इवन क्या कहते हैं जो रॉ मटेरियल्स विनियर्स के भी होते हैं, कुछ में इंडस्ट्रीज में 0 तक पहुंच जाते हैं कि उनको ये मान के चलते हैं कि 0 मॉइस्चर कंटेंट है, तो जब तक वो क्या कहते हैं प्रेसिंग या कुछ करेंगे तब तक वो में भी मॉइस्चर गेन कर ले। बट समटाइम्स सर सिचुएशन ऐसी होती है कि वो मॉइस्चर नहीं भी गेन करते हैं। अभी 0% है, दैट मीन्स कि ऑलरेडी देयर वुड सेल्स जो भी है वो तो कंप्लीटली डेड हो गई हैं। सेकंड क्या होता है सर इनमें क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज में जो है कि अभी हॉट कंडीशंस पे है समर में, तो जो नॉर्मली इंडस्ट्रीज बनाती है कॉमर्शियल रेजिन, तो उसमें सर क्या करती है कि उसमें ज्यादातर वो लोग अकॉर्डिंग टू हॉट कंडीशंस के या अपने टाइम के हिसाब से जो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आपको हार्डनर चाहिए, नॉर्मली फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड में नहीं जरूरत है। बट क्या है जो हम भी यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं उनके लिए पर्टिकुलर पैरामीटर्स है जो हम उनको एक ऑप्टिमाइज देते हैं कि पर्टिकुलर इतना होना चाहिए। बट वो भी अकॉर्डिंग कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं यूज करती हैं, कुछ है बिल्कुल भी नहीं यूज करती हैं। उनका ये रहता है कि समटाइम्स जब हम क्या कहते हैं स्प्रेडिंग करते हैं, ग्लू स्प्रेडिंग और लॉन्ग ड्यूरेशन तक रखा रहता है, या कुछ बीच में ब्रेक हुआ, वर्कर्स चले गए लेबर्स किसी काम के लिए, तो हमारा रेजिन वेस्ट होता है। सर वो ठीक है कि रेजिन वेस्ट हो गया, उन्होंने वो नहीं किया, बट ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो डायरेक्टली हमारी क्वालिटीज पे ही इफेक्ट करते हैं। तो वो क्या कहते हैं जब ये हमारे क्या करते हैं, इवन क्या करते हैं समटाइम्स हमारे इंटर्न जो इंडियन मार्केट है उसमें भी स्टेबल नहीं हो पाते हैं। बट हमें एक्सपोर्ट की मार्केट्स के लिए क्या करना है कि सर अगर हमें एक्सपोर्ट करनी है तो हमें क्वालिटीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है ना। रेजिन के साथ साथ हमें क्या कहते हैं विनियर्स की जो है वो टेम्परेचर है पैरामीटर्स, वो रेजिन जो बनाते हैं दैट टाइम पे भी पूरा कंप्लीटली देखना है कि आइदर ऐसा तो नहीं, बेसिकली ज्यादातर डिपेंड करते हैं कि हमारा फ्लो टाइम आ गया, प्रेसिपिटेट आ गया, दैट्स इट, हमारा रेजिन बन गया। उसके बीच में क्या उन्होंने फॉर्मुलेशंस पूरे फॉलो किए, पैरामीटर्स किए, टेम्परेचर मेंटेन रहा या नहीं रहा, वो उनका सेकेंडरी होता है। जस्ट लास्ट ऑप्शन वो देखते हैं कि प्रेसिपिटेशंस आ गया और हमारा फ्लो टाइम आ गया, दैट मीन्स कि मेरा रेजिन प्रिपेयर हो गया। उसमें आइदर वो फॉर्मल्डिहाइड ने रिएक्शन प्रॉपर की नहीं की, इसलिए वो क्या होता है कि जो हमारा एमिशंस रहता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीजें सर हमें क्वालिटीज पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना अगर इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं प्लांटेशंस को जैसे सभी लोगों ने बोला है कि बढ़ाना ही है, क्योंकि प्लांटेशंस में भी क्या होता है, चलिए हमें नॉर्मल कॉमर्शियल ग्रेड प्लाई चाहिए तो ओके कि हमने कोई भी यूज कर दिया, बट हम जब हायर इन प्रोडक्ट पे जाते हैं तो हमें डेंसिटी भी मैटर करती है। उसके साथ साथ क्योंकि अभी लाइक सटरिंग है, मेराइन है, तो उनमें केवल क्या कहते हैं उनमें डेंसिटी के, क्योंकि जैसे ही अगर हम रिटेंशंस पे, प्रिजर्वेटिव या कोई भी ट्रीटमेंट पे चाहते हैं केमिकल्स, तो वो ऑलरेडी हमारी क्या कहते हैं जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज है उनको कम करते हैं। तो इसलिए हमें क्या कहते हैं रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सारा हमें बहुत ध्यान देना है। उसी के साथ में अपना, और इसके साथ साथ क्या एमिशंस के लिए हमने IPIRTI ने ऑलरेडी बहुत सारा काम किया है। उसके साथ साथ इवन मेरा भी अभी लेटेस्ट ही हमने नैनो पार्टिकल्स पे भी काम किया है। नैनो पार्टिकल्स भी एक अच्छा ऑप्शन है जो क्या कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड एमिशंस के लिए।
उसके साथ नॉर्मली हम क्या करते हैं, ज्यादातर इंडस्ट्रीज के रिक्वायर पे हमने क्या कहते हैं कि जो मैकेनिकली है डिपेंड, वो नैनो पार्टिकल्स लिए। बट क्या है, अगर हम सपोज दैट रॉ क्या कहते हैं कॉस्ट अगर रिडक्शन पे जाएं, तो अदर्स मेथड्स भी हैं जिनके थ्रू हम लाइक हमारे प्लांट मटेरियल्स हैं उनसे भी हम क्या कहते हैं नैनो पार्टिकल्स से एक्सट्रैक्ट करके वो हम इंडस्ट्रीज को, तो वो हमारे नेचुरल अवेलेबल्स भी हो जाते हैं, कॉस्ट भी रिडक्ट करते हैं, एंड सेकेंडरी क्या कहते हैं हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं रहते हैं। तो ये जो सारे हैं ये पॉइंट्स हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे अच्छे से ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण जानकारी है आज हमने शेयर की है। इसमें मैं एक आपको बता दूं कि जस्ट एक सेंटेंस में ऐड करना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर रंजना मैडम ने सही जैसे डॉक्टर रंजना मैडम ने सही बताई थी कि ड्राइंग मॉइस्चर कंटेंट, बहुत फैक्ट्रीज समझते हैं कि ड्राइंग इज बेस्ड ऑन आउटसाइड टेम्परेचर, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। ड्राइंग एंड कंडीशनिंग शुड बी बेस्ड ऑन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग्स। तो उसके हिसाब से ड्राई करके कंडीशन करके मेंटेन करेंगे तो द प्रोडक्ट्स क्वालिटी विल बी इम्प्रूव्ड टू अ लॉट एक्सटेंट। एग्जांपल है कि अगर हमारा आउटसाइड टेम्परेचर 0 है, इट इज 0 डिग्री कोल्ड, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, यानी कि मैक्सिमम वी से 20 to 60% इज द बेस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20-30% है, तो उस रिलेटिव ह्यूमिडिटी में 0% ड्राई करने से कुछ भी फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर किलिंग द वुड। और कुछ भी ये 20-30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कुछ अब्सॉर्ब करने वाला नहीं है वुड। तो ये पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था। थैंक यू मनोज, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ WTA के प्रेसिडेंट सुभाष जोली सर हैं, और सुभाष जोली जी हमारे लगातार मार्गदर्शक, एक गाइड, और हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं अपने सभी आज के प्रतिभागियों को बताना चाहूंगा कि जोली जी लगातार जो भी मुद्दे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर, इन मुद्दों को जोली जी लगातार उठाते रहते हैं और उनके समाधान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो आगे की कार्रवाई सुभाष जोली जी ही संभालें। मैं सुभाष जोली सर से निवेदन करूंगा कि प्लीज सर आप आए सामने और इस कार्यक्रम की कमांड संभालें। सर जोली सर। जोली सर अनम्यूट करें, अनम्यूट नहीं हो रहा आप जी। yes. अब हो गया। डॉक्टर MP सिंह सर कंक्लूड करें सर। ओके, धन्यवाद। काफी अच्छा वर्कशॉप रहा आज, इतनी अच्छी चर्चाएं हुई हैं, और हम लोग तकरीबन 2.5-3 घंटे से 3 घंटे से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और हम लोगों ने एक्सपोर्ट से रिलेटेड सभी बिंदुओं पर काफी बेहद रूप से चर्चा की। आज IPIRTI के तरफ से डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर रंजना ने केमिकल एस्पेक्ट्स जो है उस पर बताया, विस्तार से बताया कि कैसे हम लोग क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इमिशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे लिए अल्टरनेटिव पाथ क्या है। आनंद ने भी स्टैंडर्ड से रिलेटेड चीजों को बताया कि कैसे हम लोग क्वालिटी को कंफर्म करने के लिए, जनरली हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मिलता जुलता है, बल्कि हम लोग ये भी प्रयास कर रहे थे कि अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई करें या सेपरेट स्टैंडर्ड बनाएं, ताकि जो बिजनेस एज यूजुअल में एग्रोफॉरेस्ट्री को, टिम्बर को यूज करके जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसको हम नैरेटिव जो है अलग स्टैंडर्ड अगर बनाएंगे तो हम नैरेटिव जो है सब पूरे वर्ल्ड को दे सकते हैं कि ये हमारा ये स्टैंडर्ड जो है
ये पहले जब हम फॉरेस्ट्री स्पीसीज से बनाते थे तब ये स्टैंडर्ड है। ये हमारा स्टैंडर्ड एग्रो फॉरेस्ट्री स्पीसीज से जब बना रहे हैं तब हमारा ये स्टैंडर्ड है। तो इसी के लिए डॉक्टर नाथ से भी बात हुई थी और ग्रीन प्लाई के तरफ से सपोर्ट भी मिला था। उन्होंने मॉडिफिकेशन के लिए भी अप्लाई किया था। वो प्रपोजल लगता है कि उसके नैरेटिव को थोड़ा समझने में दिक्कत हुई है। उसका नैरेटिव का मकसद यही था कि हम पूरे दुनिया को अपने स्टैंडर्ड के माध्यम से बताएं कि हमारा प्रोडक्ट अलग है पूरे वर्ल्ड में। ये इस पर अभी और जल्दी काम करने की आवश्यकता है ताकि हम पूरे वर्ल्ड को बता सके। हमें उन सब डोमेन में नहीं जाना पड़े जिससे जो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। मेरा अपना मानना है एफएससी सर्टिफिकेशन कंपल्सन है तो जरूर किया जाए, लेकिन अल्टरनेटिव पूरे वर्ल्ड को दिया जाए कि हमारा एग्री वुड पैनल प्रोडक्ट्स है। यह किस तरीके से स्टैंडर्ड में यह समाहित होता है। अगर सेपरेट स्टैंडर्ड बनाना पड़े सारे प्रोडक्ट्स के लिए, उसको भी बना के हमें कोशिश करनी चाहिए, या हम लोग अलग से एग्री वुड का स्टैंडर्ड बनाएं जो कि सारे जितने भी स्टैंडर्ड है उसके साथ में उसको ऐड करें। जिस तरीके से इमिशन के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि इमिशन के लिए अलग स्टैंडर्ड हमारे प्लाईवुड इंडस्ट्री में पैनल प्रोडक्ट्स के लिए होने चाहिए, वह शायद कुछ आया भी है। लेकिन और क्लियरली और हमें अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का ही क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा सो दैट हम एक्सपोर्ट्स के क्वालिटी को मीट कर सकें। और यह जरूरी नहीं है कि सभी जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सारे प्लेयर्स हैं सभी इस स्टैंडर्ड को मीट करें। और यह स्टैंडर्ड वॉलंटरी है, वह उनको जब तक मार्केट मिल रहा है, लो कॉस्ट मार्केट मिल रहा है, वो उसको सप्लाई करेंगे। लेकिन जो हाई ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो भी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, दे शुड कम in the structured market and they should aim for the export component. So that should be the vision for the sector, and all players have got their own roles because we need certain products at the cheaper price for the low income group people also. So we have all the markets available. So इसलिए जो बाकी इंडस्ट्री के तरफ से काफी अच्छी बातें बताई गई। यह भी बताया गया कि किस तरीके से हम लोग पूरे रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके और प्लाईवुड को एक्सपोर्ट करते हैं। यह भी एक मॉडल है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यह भी प्रपोजल है रॉ मटेरियल पर जो 5% का अभी जो कस्टम ड्यूटी है उसको 0% कर दे, ताकि यह जो डिमांड इंडस्ट्री के तरफ से आती है कि एफएससी मटेरियल इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो वह भी मीट किया जा सके। अगर हम बाहर से रॉ मटेरियल लाकर यहाँ पर प्रोडक्ट बनाकर फिर बेच सकते हैं तो यह भी एक अच्छा मॉडल है। और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यह एग्रीमेंट हो गया है, यह प्रपोजल भी है। तो हम लोग रॉ मटेरियल के कॉस्ट को कम करने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी को 0 करने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो फार्मर्स जो है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, तो फार्मर्स को भी सपोर्ट देने की आवश्यकता है। और सपोर्ट इन द सेंस कि अगर हम उनको थोड़े से ऑर्गेनाइज कर सके, उनको बेटर प्राइस मिल सके, ताकि और इंडस्ट्री का जो लोकेशन हो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर एक इंडस्ट्री के कैचमेंट एरिया में एग्रो फॉरेस्ट्री का प्रमोशन हो, हर एक इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल ऑगमेंटेशन के लिए थोड़े एफर्ट्स करे। तो यह सभी के लिए बहुत सुखदायी होगा यह यात्रा, यह जर्नी। और हमें उम्मीद है कि हम लोग एक्सपोर्ट, जब हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को मीट कर लेते हैं तो ये एक्सपोर्ट वो जबकि पूरा हो गया है, जो भी थोड़े बहुत इंपोर्ट हो रहे हैं वह कुछ सेक्टर में, फर्नीचर सेक्टर में हो रहे हैं। और यहाँ तक कुछ फर्नीचर इंडस्ट्री के साथ जब बात हुई, उनको यह भी नहीं मालूम था कि इंडिया में हाई क्वालिटी का एमडीएफ बनाए जा रहे हैं, वो अवेलेबल है। उनका डिमांड था कि आपके एमडीएफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है,
लेकिन यह जब उनको बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी एमडीएफ की जो मशीनरी बाहर में लगे हुए हैं वहीं इंडिया में लगे हुए हैं, इसलिए कोई भी क्वालिटी की एमडीएफ यहाँ बनाई जा सकती है। आपके डिमांड जैसे होंगे उस तरह से की क्वालिटी बन सकती है, उतने थिकनेस बन सकते हैं, उतने डेंसिटी की बन सकती है। तो ये एक जो मिनिस्ट्री के लेवल पर और बल्कि डीपीआईटी के लेवल पर जो मीटिंग हो रही है और जो स्पेशली कोविड के पीरियड में जितनी वार्तालाप आपस में हो रहे हैं उससे काफी मदद मिल रही है और सभी लोगों को एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझने का, जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इसके लिए मैं WTA को बधाई देता हूँ, प्लाई इनसाइट को बधाई देता हूँ कि ये रेगुलर इंटरवल पर ये लोग इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। यह वार्तालाप बहुत जरूरी है, आपस में विचार विमर्श बहुत जरूरी है, तभी हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे। क्योंकि एक समय तो इन लोगों ने ऐसा प्रपोजल ले आए थे कि इंडिया में FSC सर्टिफाइड मटेरियल लाने के लिए 0 ड्यूटी अलाउ कर दीजिए। अब उसका अलाउ करने का मतलब था कि पूरे MDF और पैनल प्रोडक्ट्स पर आप 0 ड्यूटी, अभी जो 10% है वो 0 ड्यूटी की बात कर रहे थे। Then we from the institute opposed this, that we said this is not the requirement of the sector as such. It may be a specific requirement of a specific player, but we cannot ignore our own manufacturer. We can produce any quality of the products, and as far as the FSC is concerned, that is demand driven. If you want FSC certified, then there are industry who, especially Greenpanel and Greenply जो है सो FSC सर्टिफाइड मटेरियल बना रही है, जब उनको बताया गया तो फिर उसके बाद में यह आइडिया अभी ड्रॉप हुआ है। तो यह एक वार्तालाप करने की बहुत आवश्यकता है। यह सेक्टर का भविष्य बहुत अच्छा है और हमें उम्मीद है कि इस साल अगस्त जब हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग नए एक्ट हम लोग लेके आए जिसमें कि पूरे फैसिलिटेशन का प्रावधान होगा, ताकि जितने भी एग्रो फॉरेस्ट्री हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको सर्टिफाई करने का प्रावधान होगा, ताकि एक हम पूरे वर्ल्ड को न्यू रिजीम जो है एग्रीवुड का दे सके। लेकिन सभी इंडस्ट्री को भी अपने अपने तरीके से यह नैरेटिव अभी से शुरू करना चाहिए। यह मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सुभाष जी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली सर आज। और निश्चित ही सर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लोकल टू ग्लोबल, वो सपना जरूर साकार होगा सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। Thank you all for joining us. Thank you very much. हेलो सर, एक मिनट। या हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी जनाब जोली सर। सर पहले जब मैं, क्योंकि 50 साल से हूँ प्लाईवुड के अंदर में, तो आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, केरल, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सब देखा है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं थोड़ा सा इसमें सर, कि जो पहले प्लाई बनती थी उसकी टिम्बर तो अच्छी थी, लेकिन जो प्लाई बनती है, प्लाई का मतलब है वीनियर प्लस रेजिन इज इक्वल टू प्लाई। तो प्लाई वीनियर तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी कवरेज बहुत ज्यादा लेते थे, तो वो रेजिन कमजोर था, समझ लीजिए, बन जाती थी प्लाई। अब लकड़ी थोड़ी कमजोर है लेकिन रेजिन मजबूत डाल रहे हैं, तो प्लाई वैसी बन रही है, एज पर IS स्पेसिफिकेशन पास कर रही है सर। तो ये जो कंसेप्ट है, हम बार बार ये कहें कि वो लकड़ी अच्छी नहीं है, ये हम बाकी संसार को ये बता रहे हैं कि हमारे पास में लकड़ी अच्छी नहीं है, ये नहीं, वो किसी भी स्पेसिफिकेशन में सब में टेस्ट में पास हो रही है। खाली MOE MOR के लिए जो बीच का पैनल है, डॉक्टर नाथ इस टाइम नहीं है, तो उनका कंसेप्ट है कि बीच में जो पैनल है उसका अगर थिकनेस बढ़ा देते हैं और फेस का कर देते हैं तो MOE MR भी पास होती है, जहां तक मैं तो इसलिए इस मिसकंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर MP सिंह साहब को, जिनको दिन में किसी भी पल याद करने से वो अपनी मदद को तत्पर रहते हैं। डॉक्टर शक्ति सिंह चौहान को भी
इस पल जिस पल याद करता हूँ उस पल जो है उनका साथ मिलता है। बसु सर, प्रशांत सर, अजबानी सर जी को भी धन्यवाद। आज सहयोग बहुत अच्छा मिला और बहुत अच्छा। डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर रंजना यादव, इन सब को भी धन्यवाद। और धन्यवाद मेरे साथी गजेंद्र राजपूत और श्री वैद्यनाथन और मनोज जी और सुरेश भारती, सबको धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Jolly साहब। Thank you. Thank you very much. Thank you all. Thank you महती साहब को भी धन्यवाद जी, धन्यवाद। Thank आप you, लोगों sir. का आशीर्वाद है। Thank you everybody. Bye. Thank you. Thank Bye. you, sir. Bye. Versatile environment and people-friendly living. Greenpanel Industries Limited, the largest manufacturer of MDF in India and leading wood panel brand in Asia, is committed to this new lifestyle. Being a true Make in India brand, Greenpanel is strengthening the nation bit by bit, piece by piece. We resolve to delight our consumers with new generation solutions in wood paneling and surface enhancement. The brand has made a remarkable journey over the years since its earlier avatar as Greenpanel Max and now as Greenpanel. We are the torchbearers of new global India, and we do so under the guidance of Mr. Shiv Prakash Mittal, Chairman, Mr. Chauhan Mittal, MD, CEO. Greenpanel is striding towards setting new benchmarks for the industry. 2 state-of-the-art manufacturing facilities with German technologies, sustainable practices across categories, a wide distribution network with 3,000 plus retailers and 24 plus branches in India. We, the pioneers of the MDF revolution, are here to redefine wood panel industry. We are proud to present the building blocks that makes interior spaces desirable and strengthening the nation. We are Greenpanel, a world of limitless possibilities. We are Greenpanel, the pride of India, the panel of India.